ये एक नैरेटिव हमारे दिमाग से हटा देना चाहिए कि कास्टिज्म इज अ थिंग ऑफ द विलेजेस. नो, it's rampant in urban areas. People will not spell it out. I am a casteist. They won't do it, but there are many markers or indicators of it. I have gone to many friends' house. मैं देखा मैं सबको ग्लास के प्लेट में सर्व कर रहे हैं, बट एक अपनी मेड को जो है स्टील का कप दे रहे हैं. कुछ बोल नहीं रहे, मेड से बड़ा खूबसूरत से बात कर रहे हैं. अच्छा दीदी कब आओगी, आप क्या करोगी, बट फिर भी स्टील का कप, स्टील का प्लेट. कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पर समझ में सबको आ रहा है. You see Kala, I think that's where I think Paranjit has taken out so much of his political views on caste and religion and so many things, you know. And it's an out and out Rajnikant flick. It's an out and out masala dhamal film, and that's important. कौन आर्ट फिल्म देखने, we need to understand the reality of India. कौन जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं आर्ट फिल्म देखने? You bring the narrative forward because people are going to see it. More and more people are going to come and see it because Rajnikant is there. There is a star power, and then there's your politics, and then both are merged. Your politics is reaching the right places, and the film पैसा भी कमा रही है. It starts with a video recording. तो video recording देखते ही ना आप थोड़ा सा दिमाग में हिल जाते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप का ज़माना है, इतने लिंचिंग की खबर आते रहते हैं. हर रोज़ मेरा एक नया वीडियो आता है कि कोई ना कोई अक्रॉस रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से कोई ना कोई लिंच हो रहा है, यू नो. तो इट स्टार्ट्स विद अ वीडियो रिकॉर्डिंग एंड के ग्रुप ऑफ पीपल, यू नो, और आपको डिस्टेंस सुनाई दे रहा है, क्लियर भी नहीं कि बोल भारत माता की जय बोल. एंड एट द एंड श्रवण, आई थिंक श्रवण नाम हो रहा था, एंड ही इज बीटिंग जिमी शेरिल्स कैरेक्टर एंड ही इज सेइंग ये ले अभी चलो यही बोलना है ना, ये बोलने से माफ हो जाएगा ना, चलो ये मैंने बोल दिया. So welcome to the podcast, bro. Thank you, man. Thank you. Pleasure to be here. So before the podcast, अपन बात कर रहे थे about the writing style. Yeah. So you said कि you don't necessarily think about a theme as such. Right. So I was really intrigued कि तेरा writing process है क्या? If you don't think about a theme, like what intrigues you? On a daily basis, you get ideas, and you have to pin down upon which one you want to pursue. Right. So how do you even decide that? It's difficult. See, of course, it's not like, I mean, if you're asking me to tell my process, I'm in a stage where I'm still discovering it, right? I'm still discovering my process. Yes, I do not write with a particular theme in mind कि चलो ये theme है और इसके ऊपर मुझे कुछ करना है. It doesn't necessarily come like that. Any subject or any topic or anything. Recently, we were talking about the script that I wrote. It's from a poem that I read, and that poem it moved me. It spoke to me, and I thought that there is a potential, for me to make a film on it, and hence that is how I wrote the script. You know, hopefully I'll get to make it soon. But that is how I wrote the script. Now, there was no particular process that I followed. It was just that it affected me, and along with the other work that I do, I was simultaneously jotting down everything that I felt that should be in the film, while also respecting the poem and the poet who wrote it. So for this particular project, this was the process. For other projects, ideas come to you in a different way, you know. Sometimes me and you are talking, you know, and something will click, you know. And I've, I made a film called Torn. And it was, the idea of it generated from a conversation that I had with one of my aunts. About how she came into the house, her dreams, and how, you know, at times, you know, she had to sacrifice them, you know, and all of those conversations really moved me. And it had been like काफी time हो गया था. And suddenly I wanted to make a film, and suddenly that conversation just came up in my mind. And then I decided to write the script. Ye Nayan Dere, which is on YouTube, my latest film. That the idea for that came when I was just driving and I was listening to this Hemant Kumar song, Ye Nayan Dere Dere. So
the song was constantly on loop, and मैंने ना गाड़ी पार्क की, I saw a nice quiet place, मैंने पार्क की, मैंने जरा अपने सीट को रिलैक्स किया, and वो गाना मैं सुनते रहा, and the first visual that was inside my mind, which appeared was two boys, on a bed, on a very small bed, just lying next to each other, and they slowly open their eyes, and this was it. This was it, and that's how I picked up from that visual. I made an entire narrative out of it, with the song being the crux of it. So that's what I think. That is, it's not really certain कि मेरा writing process कुछ है. It's like, yeah. So once you get the idea, what after that? Because वो first blink of a thing तेरे को कभी भी आ सकता है, be it listening a song, reading a poem, जो भी. But then once you decide कि I'm gonna do something about this, what after that? Like, do you actually jot things down? Do you write properly? See, depends. Sometimes. So it's a very nice question, because, and it's also the most difficult part, I think, any filmmaker. I mean, I'm not yet a filmmaker, I'm just a budding artist. You've made films, so you're a filmmaker. Yeah, but then everyone who is struggling in this line, who is struggling to write, I think they'll relate that the process, the genesis of an idea happens to everyone. It's pretty easy, actually. It's pretty easy, and it's organic, right? But to jot it down in a script, to bring it to a structure, it's very difficult. And so it's something that even I'm struggling with even right now. But what I think that works for me is just writing. You could write shit, but just write. क्या आपने एक बार लिखना शुरू कर दिया ना, तो वो चीजें आती जाती है. At least in my case that happens. I'll just start, and then things will fall into place, and then I revise it, I make some tweaks, and then I polish it. So that's how it happens. But bro, तेरे को नहीं लगता writing is a self-hating job? Like तू लिखने बैठता है, and you're like, अच्छा ठीक है, let's do something about this. And 2-3 hours into it, you're fucking bored. तेरे को शायद कभी कुछ आ नहीं रहा. And you're like, कुछ देख लेता है यार, फोन पे कुछ देख लेता है, कहीं और कुछ देख लेता है. And then once you start doing that, you start hating yourself कि यार बहन कुछ आ क्यों नहीं रहा यार, मतलब मेरे को लगता है वैसे ही राइटर हूँ, बट देन फिर कुछ आ नहीं रहा. बट जेरी साइनफील्ड said a really interesting thing कि your job is just to show up. Like just show up, 2 घंटे बैठ, उसका प्रोसेस ये है, वो 2 घंटे बैठेगा एक पेपर लेकर, एंड इज लाइक अगर मेरे को कुछ नहीं भी आया ना, आई डोंट हेट माई सेल्फ. आज 2 घंटे बैठूंगा, कुछ नहीं आया, प्रॉब्ली आई हैव शिट आइडियाज, बट कल मैं जब 2 घंटे और बैठूंगा, सो एटलीस्ट आई हैव लेट आउट द शिट आइडियाज, मैंने निकाल दिया एटलीस्ट. That's true. That is, I absolutely agree. I think just letting it out, that's why I said I'll write shit, but at least I'll write, At least, as Jerry said that, you just let out the shitty ideas, just let them out, so that that they're shitty, so that they are वो आपके अंदर खिचड़ी ना बन रही हो, ठीक है. तो आपने वो एक जैसे हम वो एक्वागार्ड रहता है ना, प्यूरिफाई कर करके, तो लेयर्स ऑफ प्यूरिफिकेशन रहता है जब एक स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रोसेस. ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट बनाते हैं आप खुद सोचते हैं, आप अपने दोस्त को सुनाते हैं, हमेशा. Luckily I have friends like that who are really supportive and who are also very blunt in the kind of criticism that they give. तो मैं सुनाता हूँ, अगर उनको अच्छी लगी तो बोलते हैं अच्छी है, ये बेटर कर सकता है, ये बेटर. अगर उनको बुरी लगी तो बोल देते हैं यार. ये डिसाइड कैसे करता है कि किसका क्रिटिसिज्म लेना है, किसका नहीं लेना? बिकॉज अगर तू सबका लेने जाएगा ना, तो प्रॉब्ली that's true. I mean, if it makes sense to me. If it makes sense to me, whatever if they're saying, listen to it and be like, yeah, does this make sense? Yeah, because a lot of people will say a lot of things. I mean, you can't listen to all of them, and also उनके taste पे matter करता है, right? It's, you also need to know it's very subjective. So you pick up things from different people, little things, mold it into in the way you want it to look like. You want your film to look like. You take those criticisms, and fortunately, I have people like that around me. Especially in Bombay, who are very direct about it. कि अच्छा मैंने फिल्म भी दिखाई, नहीं चली तो नहीं चली,
अगर अच्छी नहीं लगी तो दे वोंट शुगर कोट इट, लाइक यार इस बार वो बात नहीं है यार, आई थिंक यू आर लैकिंग दिस, अभी यू आर लैकिंग दैट. बट देन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना भी एक आर्ट है यार. लाइक बहुत लोग बस ये बोल देते हैं अच्छा पसंद नहीं आई, बट देन फिर एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि व्हाट डजंट वर्क एंड व्हाट वर्क्स, वो भी एक आर्ट है. लाइक नॉट ऑल ऑफ देम कैन डू इट. या एंड आल्सो आई थिंक दैट आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे प्रेजेंट करते हो. अब I could have a very valid reason to not like whatever you have made. But अगर मैं बोलूँ यार शिवम क्या बनाया यार ना तूने कैमरा ढंग से बिठाया है और ना तूने माइक तूने ढंग से लगाया है और वो क्या बैकग्राउंड नॉइज आ रहा. अब शायद ये सारी चीजें वैलिड है, पर मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ आप लोगे नहीं. कंस्ट्रक्टिव नहीं है ना. हाँ नहीं कंस्ट्रक्टिव, मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव भी है, मैं कह रहा हूँ वैलिड भी है, पर जिस तरीके से मैंने आपको बोला वो आप लोगे नहीं, वो आड़े आ जाता है, वो आड़े आ जाता है. अगर मैं आपको बोलूँ यार शुभम इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाटएवर यू हैव मेड, बट आई थिंक वो कैमरा जो है ना आई डोंट थिंक इट वर्क फॉर मी, या फिर द वे यू वो साउंड जो है ना वो खटक रहा है. आई थिंक नाउ व्हेन आई से इट लाइक दैट, व्हेन आई पुट इट लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड कि अच्छा दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन. तो आप ये सेम चीज तो ऐसे भी बोल सकते हो, व्हाई डू यू नीड टू बी रूड. So I think as you said, you very rightly said that it's criticism देना भी एक आर्ट है और बहुत लोगों को नहीं पता. So मैं बहुत particular हूँ about stuff I write. I have a friend and he also writes. Right. So मैं mostly उसी से consult करता हूँ कि bro is it working, तेरे लिए work कर रहा है क्या. Right. And like keeping in mind कि अच्छा ठीक है उसका टेस्ट क्या है और मेरा टेस्ट क्या है. Right. So उस हिसाब से भी criticism देता है which works. मैं ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाता. नहीं, of course. Fine. But something that's interesting तूने बोला कि writing में it's like just like filtering out the ideas, right? Which is even that there's a quote, right? Writing is mostly rewriting. And I heard Greta Gerwig कि she writes these huge fucking scripts like 300-400 pages की, and then she says कि at some point after I'm halfway through it, the character starts to speak to me, and then it becomes easy. Right. But even to get to that point, वो फिर उसमें गांड मर जाती है भाई. लाइक कहाँ से Right. everything I get ठीक है, you have to show up, you have to write and all of that, but once you're in the process खुद को ये चीज़ें रिमाइंड करना वो बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए. I think वही बात है ना, मुश्किल तो होता ही है, मुश्किल होगी, but to just get yourself to the table is enough is what I'm saying. That's enough. That's what Jerry said, you know. और उसकी एक बात में पूरा एनकैप्सुलेट हो जाता है, हम जिसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं. अरे we are human beings, we deal with like different things at the same time. आपको आपके बिल्स पे करने हैं, आपको पता नहीं आपकी फ्यूचर क्या, आपको पता नहीं फिल्म जो आप लिख रहे हो उसकी फंडिंग मिलेगी कि नहीं, है ना. आपकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा चल रहा है. अब यू नो इट्स वी डील विद सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम. इट्स नॉट द क्रिएटिव फ्लो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इट टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एवरी टाइम आई सिट हियर, every time my creativity वो switch तो नहीं है ना. So but then the process of just getting yourself to the table, just writing, sometimes I just doodle, I end up doodling. I sometimes मैं script लिखने बैठता हूँ and I just अगर you know God forbid अगर मेरे पास अगर कोई pen and paper हुआ, I end up doodling, I doodle also. तो मैं ऐसे कार्टून वार्टून बनाते रहता हूँ, वो करता हूँ. But you know फिर यार और नहीं, no टक 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 लिखा थोड़ा, मैं भी कुछ भी लिख रहा हूँ मैं. बट आई हैव सीन कि once you start ना, for me it works. Once I start the process of getting to that starting point is difficult for me. It's not difficult, I'm navigating it. But once I start, I think as Greta said that you reach to a point where the characters are speaking for themselves. You know, वो आप एक इंडिविजुअल एक वॉइस आप एक लेंड करते हो कैरेक्टर्स को. सो आई थिंक मेरे लिए प्रॉब्लम वो स्वीट स्पॉट है, लाइक halfway through the script is where I know कि if even I want to continue with it, because there are a lot of projects which are like you start writing and फिर लिखते हो 10-15 पेज and you're like यार नहीं जम रहा, probably it isn't as interesting जो मेरे को लग रहा था. So वो भी फिर figure out करना मुश्किल होता है कि किसके साथ you should just stick and let it be
जिसके साथ you should just give up. Right. I've given up a lot of projects like that. But anyway, let's talk about your film. Firstly, I wanna like you've told me the genesis of it, how it started, and then once you got the idea, you wrote it. What was the process? Making the film? The making of the film. Yeah. So Yen and Dere was the idea came to me in Guwahati. So I study in Bombay and I work in Bombay. Most of my film का काम वही होता है. So Bombay में it was a part of our projects. So हमको फिल्म बनानी थी and ideas बस आ नहीं रहे थे. तो मैंने सोचा let me take some time. I have some time. Why do I not cultivate this idea that I had into a film? So होता है ना, एक तीर से आप दो निशान मारते हो रहा है, मतलब एक तीर से दो निशान है. तो मुझे लगा कि लेट मी डेवलप दिस स्टोरी दैट आई हैड. सो उससे प्रोजेक्ट भी हो रहा है एंड मेरा पर्सनल जो मुझे बनाना था वो भी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है. सी यूजुअली आई थिंक मैं ये देखता हूँ कि कॉलेज के प्रोजेक्ट्स ये है और मेरा खुद का मुझे ये बनाना है. और जो खुद का मुझे जो बनाना होता है ना, उसमें मुझे वक्त चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होती है, क्योंकि आप डेडलाइंस में काम नहीं कर सकते और कॉलेज डेडलाइंस पे काम करता है. इस वाले के लिए आई हैड टाइम एंड यू नो आई हेल्पफुल फ्रेंड्स. मैंने लाइट्स किसी से लिए, मैंने कैमरा मेरे रूममेट का कैमरा लिया, which is just terrific. The visuals that you see, it's all the, you know, he has a Fujifilm and I've always been so mesmerized by. He himself is a great photographer, great filmmaker, and so much of it, so much of his aesthetic sense, it's really inspiring for me. So I got his camera, you know, discussed the visuals with him, discussed the script with other friends, you know. देन ये फिल्म बनाने के पहले एक प्रोसेस रहता है प्रोफेसर से अप्रूव कराने का. ठीक है. जहां आप एक डेक बनाते हो अपने पूरे फिल्म का. क्या बनाते हो? डेक. अच्छा. एक पीपीटी बनाते हो. तो और वो आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से उसमें मार्क्स रहते हैं. तो उसमें अगर सर ने बोला कि हाँ ये बनाओ, इफ यू आर एबल टू कन्विंस द प्रोफेसर के हाँ ठीक है यार चलो बना लेगा तो ठीक है, वरना तो यू चेंज द आइडिया. अच्छा. हाँ, यू चेंज द आइडिया. आई वाज क्वाइट नर्वस अबाउट दैट. सो द एंटायर नाइट बिफोर द प्रेजेंटेशन, और द थिंग इज मैं थोड़ा सा केयरलेस हूँ, मैं भूल गया था प्रेजेंटेशन है और मैं फिल्म पे और तो सबने प्रेजेंटेशन कर लिया था. मैंने हाँ ठीक है. बट देन उसने बोला कि लास्ट डेट है. बोले क्या बात कर रहा है, लास्ट डेट है. मेरे दोस्त ने कहा यार ये तो फिर I at the entire night I sat through it and I was so nervous because if my professor rejects this, that means ये फिर से pending रह जाएगा and I have to search for a new idea, you know. So that will take up a lot of time and मैं कोई भी को लगा था क्या रिजेक्ट होगा because subject matter की वजह से? Not as really. Such not an issue. Not really. I mean कहीं ना कहीं था because of the treatment. बिकॉज हमको फिल्म बनानी थी काफ़ी ऐसा 10-15 मिनट की. और मेरे फिल्म का लॉग लाइन ही क्या है बताओ ना. अब बता सकते हो, आपके दो लड़के जो कि प्यार करते हैं, दो इंसान जो एक दूसरे से प्यार करते हैं. एंड in fact even in the description I write that a short film about the abundance of love and the lack of it and the lack of it. You know, so you know that so was just so I got to it. I wanted to ask you this. इसका मतलब क्या था in the larger scheme? So Yen and Dere was so much about, it was about love, yes, but it was also about spaces that you inhabit. You know, I have always been fascinated by it. There is a lot of warmth that comes from particular spaces. आपका रूम हो, आप जिससे प्यार करते हो, उनका कोई कमरा हो, वो चीज़ें आपके जहन में बस जाती हैं. एंड हमेशा ऐसा हुआ है कि अगर मेरे रूम में कोई रहा है, हमेशा इवन मेरे घर पे या फिर वहाँ भी, कि some person has come and we have had a lot of fun, and वो जब वो इंसान चला जाता है ना, तो एक खालीपन सा महसूस होता है. एंड आई सी दैट, आई डोंट नो इफ
I'll be able to explain it to you well. But I feel कि वो जो कप में उसने चाय पी थी, है ना? वो जो एक वो सिगरेट का डब्बा जो उसने खुला छोड़ दिया था, everything until I wash it, until I touch it, it still carries that person's touch, and that person is not there anymore. They're not there in the space, but somehow through that touch, through those objects, they still live on, and I think that absence is so melancholic to me. And I think it's the same way about it kind of made sense when I was writing it. It kind of made sense that even in our hearts, people come and they make a space, a very warm, lovable space. You're very happy, and once they leave, the absence looms over. And so one moment there's so much love, and the other moment there's nothing. Yeah. So the abundance and the lack of it at the same time, sort of. So I think that really fascinated me, and in my films I've always wanted to explore the smallest of things like this. You won't discuss all of this in the larger schemes of life. We forget these small details that somehow affect us, and I've always, as a human being, I've always looked at them, and as a filmmaker also I want to explore these things. So मैंने ये चीज़ तेरे बारे में ज़रूर नोटिस करी है, like you talk about small instances, small moments, right? And you talk about log line. तेरे से शायद log line पूछेगी था, and you were like, अच्छा इसकी log line मैं क्या दूँ? Because it's not a narrative, right? Exactly. It's like capturing moments. Even I guess it was Tarkovsky जिसके book में शायद उसने define करा था sculpting time में कि cinema is not as much a visual medium as much as it is about capturing time, moments and time. Right. So मेरे को लगता है वो काफी apt बैठता है तेरे film के साथ, because it's essentially catching moments and time, right? That's true. I think it's about जब वो होता था ना कि देखो मैं तो कभी साइंस का स्टूडेंट था नहीं, पर आप जब स्कूल में 11वीं 12वीं में साइंस करी है भाई वैसे तो यू वुड नो बेटर. तो मैं अगर मेरे से बोलने में कुछ भी टर्न वर्न गलती हो गई प्लीज माफ कर देना. तो जब स्कूल में वो ऐसा रहता था ना, ऐसा माइक्रोस्कोप लेके कुछ तो एक पत्ता वत्ता देखते थे, दूर से दिखता था बड़ा साधारण सा, पर आप जब वो कीड़ा मकोड़ा ऐसे कर रहे होते थे, अंदर से जा रहा है. And it was fascinating. It still is. I mean, कि आप दूर से देख रहे हो ये, but आप जब उस चीज के पास आके देख रहे हो, आप देख रहे हो कि वो चीज कितनी intricate details से बनी हुई है. That is how I look at life. I think more than the bigger moments, I think it's really the small moments that matter to me, and that is what I look for in my films as well. And also, you make the kind of films that you want to see. I've always inclined towards that kind of films. I watch all kind of films, but I've always had a lean towards films which explore parts of life that we usually unsee. If you can make the boring interesting, you can make that. That's absolutely. The mundane. How to make the mundane. Because I think there's a lot of beauty in the mundanity. The mundaneness. I think there's a lot of beauty in it, and once it's like a moment in time, as you said, but you look through it with a microscope, and you see the intricate details in that moment of time. It's just two guys in one room. There's nothing major happening. There's nothing major happening. There's not a big conflict. Drama के rules है ना. There's no stakes as such. Yeah. Like of course there are stakes at a minimum level, but it's not कि अच्छा दुनिया खत्म हो जाएगी शायद. इनकी शायद हो जाएगी. इनकी शायद हो जाए. Never know. So because when you also need to be very sensitive when you're dealing with queer narratives. That is why I always because this is a school project, college project, you can't really get in many people from the community, but I still wanted Abir, who plays one of the characters, I saw him in my college. He's a filmmaker. He's from the same course. He never really acted as such. Which one of those guys is Abir? The one who is wearing the black tank. Acha. Yeah, he's Abir. Yeah, so he's from the community. He's from the core community, and
but I looked at him, and while writing the character, I never spoke to him my entire life in college. अच्छा I have never spoken to him. मैंने बस दूर से उसको देखा है. हाँ पर पता नहीं क्यों मैं जब ये कैरेक्टर लिख रहा था ना, हाँ ये कैरेक्टर्स के नाम वहाँ मेंशन नहीं है, पर मैं जब स्क्रिप्ट में लिख रहा था मैंने कैरेक्टर्स के नाम भी मेंशन किए थे. अच्छा एक का नाम था एल्बर्ट, एंड अबीर के कैरेक्टर एल्बर्ट वाज प्लेड बाय दिशांत, हु इज आल्सो वेरी गुड फ्रेंड, एंड दूसरे का नाम था दीपक, अच्छा who was played by Abir. So I saw Abir, and I pitched, and I was very nervous that because if he doesn't do it, it's going to be heartbreaking for me, because I really imagined him in that role. I did not really want to assign any roles to him. I just like Abir, there's this project, and I mean I got his number from someone, and like there's this project, and I've seen you, and I think you'll be good for a particular role. You just read the script, and if you see how you like it. So you also need a perspective, because I am a cishet man, and I am dealing with a queer narrative. So I need to be extra careful, extra sensitive, that there is dignity in the portrayal. And I think a perspective from that community or someone from the community was needed. So I was like, even if Abir doesn't act in this film, I think even if he gives me some criticism or gives me some feedback, it will be very helpful for my film. But he was such a sweetheart that he said that, and I was like, मैं ना बड़े डर के उससे पूछ रहा था कौन सा रोल अच्छा लगा, because I had a particular role or frame in mind, and he said that exact role. And like, thank God. मैं वरना पता नहीं आपको क्या मैं कैसे करता, and he's such a जो चीज तेरे को ट्रांसलेट हुई थी उस रोल का वो उसको भी हो गई, and probably because मैं उसको सोच के पता नहीं क्यों मैंने लिखा था, वो चीज. So, and he decided to come on board, then Dishant decided to come on board, and both of them, I think, they've also not spoken much. They're friends, of course, but not friends, matlab. But the way they've built the entire aura, the way they were comfortable around each other, it's so beautiful. I think a lot of the credit of the compliments that I've been getting, the praises, Nayan and they got a lot of love, and a lot of it, a lot of the credit goes to these two people, yeah, for sure, to just take it forward, to bring an amount of warmth in it, and it was an entire one-day shoot. ठीक है, तो अच्छा ये सारा एक दिन में करा था? पूरा एक दिन का शूट है. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. पूरा एक दिन का शूट है. ओके, बिकॉज मैं जिस घर में कर रहा था ना, दैट घर भी वो मेरे दोस्त का था. अच्छा, ठीक है. डोरिना, whom I mentioned, so Dorina and Ria, they both live in the same place, and they were kind enough to, Dorina also helped me out with some lightings and stuff, and they were kind enough to give me that house for a one day, because तब ना, क्योंकि हम एक सर्कल में रहते हैं जहां हमारे क्लास में सबका प्रोजेक्ट एक साथ हो रहा है. तो अभी DI इज ऑल्सो फ्रॉम माई क्लास, आई मीन, तो उसके भी प्रोजेक्ट उसी घर में हो रहे थे, तो साइमल्टेनियसली एक घर में 2 शूट हो रहे थे. अच्छा, लेजिट ऐसा सिचुएशन था. So there's a lot of mess, and there was a lot of chaos, and that is how Yen and Dere got made. It's entirely in one day, and I thank everyone involved for their patience, just for their patience. So yeah, that was it. Let's talk about the acting, because you've mentioned about the actors and how they made it special. I feel कि like the actors have done a brilliant job. And क्योंकि इसमें dialogues नहीं है, so I guess it's even harder to do a subtle portrayal, right? Yeah. So what is the process working with actors, and like did you learn something fascinating about working with actors as such? I think working or directing, the direction has always been my field, and especially acting, I think there's a certain power that I have. I mean, power as in there's a certain command that I can have, because as an actor,
I can empathize with other actors. Oh, हाँ. Because Of course. because the journeys of I am also an actor, you know, the journey started with theater, so I myself am an actor, so I can empathize with the actors. I can empathize with whatever they're going through. If they think that यार ये ज्यादा टेक्स करवा रहा है या ज्यादा, you know, कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छा चलो शॉट अच्छा नहीं आया, क्या एक्टिंग गलत हुआ, चल मैं बोल दिया यार नहीं एक्टिंग बहुत बढ़िया था, कुछ तो लाइटिंग का गड़बड़ हो गया और तो मैं लाइट में जाके तो वो मैं उनके चेहरे में देख सकता हूँ, नॉट इन दिस फिल्म ऑफ कोर्स बट इन मेनी प्रोजेक्ट्स, तो मैं उनके चेहरे में देख सकता हूँ कि बोले यार ये तो झूठ है, ये पक्की बात है, और यू नो वो फिर मैं उनको बोलता हूँ अच्छा लाइटिंग ठीक करके हाँ सुन ना अभी ये टेक लेंगे ना तो इस टेक में ऐसा करना, फिर वो वैसा कर देता हूँ मैं, ठीक है, वैसे उनको इम्प्रूव करवा देता हूँ बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू से, तो ऐसे ना एम्पैथी आती है एज एन एक्टर, तो वो एक चीज मुझे बहुत हेल्प करती है जब मैं व्हेनेवर आई एम डायरेक्टिंग एक्टर्स, सो आई थिंक ऐसा कोई खास अगेन प्रोसेस नहीं है कि अच्छा तेरे लिए बस वो हेल्प करता है कि क्योंकि तू एक एक्टर है तो तेरे को पता है हाउ टू मेक इट वर्क विद एक्टर्स, हाउ टू नेविगेट वो चीजें. सो मेरे को ये भी पूछना था अबाउट द फिल्म, व्हाई इज इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, वाज देयर अ नेसेसरी रीजन फॉर दैट? Well, I'll be totally honest with you. No. Just the aesthetic. I mean, I could come up with a philosophical answer. No, well, because you can always. World is so grim and it's the reality is so dark. That's why I did not know. The characters don't have any colors in their lives. Yeah, कुछ भी बोल दो भाई. रंग उनके उसमें नहीं है, पर वो रंग की तलाश में है. ये मैं बोल ही सकता हूँ. But no, an honest answer is no. It is purely aesthetic because of an aesthetical reason. Because I saw the film in black and white. I don't know why. If you ask me why, I cannot reason my way into it. I saw the film in black and white. Technically आसान हो जाता है या मुश्किल हो जाता है? और technically आसान हो जाता है. आसान हो जाता है, right? But then that's not why I chose black and white. That was a bonus. बोल सकते हो, cherry on top of the cake. That a lot of the times colors and at the day of the time it gets really kind of neutral and आपको उतना पता नहीं चलता, उतना डिटेल में पता नहीं चलता, कुछ गलतियाँ छुप जाती हैं ब्लैक एंड वाइट में. तो of course it has its own challenges as well, but mainly हाँ वो बात है. But then I saw the film in black and white. The first visual that I had was in black and white. I don't know why. And I decided to do that. I mean, there probably a lot of things के तेको reasons भी पता नहीं होता, and you don't have to. And I don't have to. I don't think I owe anyone any explanation why my film is black and white. Of course. Because that's why I said कि I sometimes लोग कर देते हैं black and white में film and I mean I asked them कि क्या कहते हैं, क्या है reason, like why? Was it just so there is some kind of shame in admitting that it is just for aesthetical purposes. There is some burden that you have to come up with a logic and a reason or some kind of philosophy, out of the world philosophy, or philosophy dipped in social realities. And I just don't get it. I mean, I said that it's just for aesthetical reasons. There's nothing, no particular thought behind it. I saw it in black and white, and that's why I tried to do it. Yeah, which works. You said कि तेको इस तरीके के फिल्म्स काफ़ी इंट्रीग करते हैं, which capture moments, which capture the mundanity of life. So if you imagine yourself like 5 years, 2-3 years down the lane, if you make a feature film, like how do you imagine it to be? Like, do you imagine it to be of a certain style of a filmmaker? Did you ever think about it? Because I do sometimes. कैसा होगा probably. I do think about it. Similar to. Yeah, I do think about it, but I have a very blurry vision about it. I definitely know how I want my films to be, the kind of films that I want to make. Maybe in the coming years it might change, it might not change. I'm not bothered about that. I will make the kind of films that I want to make right now. Look-wise, because over the course of time, there are so many things that influence you. You start looking at things and topics and aesthetics and structure or grammar, to be precise, in a different light. And that might happen. So I'm not, मैं कोई भी चीज़ certainly नहीं बोल सकता कि अच्छा ऐसा ही मैंने वो किया और ऐसा ही होगा.
नेवर. कभी कभार ख्याल आते हैं कि हाँ यार चलो यार फीचर बनाने को मिलेगा तो क्या किसके ऊपर बनाएंगे एंड दिस एंड दैट, बट दोज आर फ्लीटिंग थॉट्स. ऐसे कुछ आइडियाज है जो जॉट डाउन करके रखे हैं कि प्रॉब्ली आई विल राइट नॉट दिस रियली, एज अ फीचर? नॉट रियली. हाँ मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मैं सोचता रहता हूँ कि यार इस पे बनानी है, इस पे बनानी है, बट वैसे जॉट डाउन करके नहीं रहता कि अगर मेरे पास अभी ये एक प्रोजेक्ट है तो मैं इसी पे काम करता हूँ, इसी पे अपना पूरा एनर्जी लगा देता हूँ कि एटलीस्ट ये तो अच्छा हो. बाकी अब फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा. Have you heard about this thing called second braining? Second braining? No. Second Enlighten braining. me. So second braining is basically a lot of things that you see, a lot of content that you read वगैरह वगैरह. Right. अगर तुम उसे यूज नहीं करते कहीं, so it just goes away from your memory. And तू आज 2 साल पहले शायद तू किसी चीज़ के बारे में बहुत कुछ जान सकता था, बट आज तेरे को अगर उस चीज़ के बारे में पूछा जाए you'd probably have no idea. So second braining is basically this idea कि तू जो भी देखता है, जो भी तेरे को इंट्रिग करता है, यू पुट इट इन अ सेकंड ब्रेन. इट्स लाइक अ नोटबुक और व्हाटएवर नोशन पेज जहाँ तू वो चीज़ें लिख लेता है. एंड उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, बट देन इवेंचुअली द आइडिया इज कि अगर तेरे को फ्यूचर में कभी यूज़ करना हो, सो यू कुड यूज इट फ्रॉम देयर, लाइक यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट विच आई हैव बीन रिसेंटली डूइंग. बिकॉज मैं भी वो नहीं करता था क्योंकि आइडियाज़ लिखने में काफ़ी यार दिक्कत होती है. लाइक मैं and I don't know what is it about ideas, but the most intriguing ideas come to you just before तेरे को नींद आने वाली है. अच्छा. लाइक वो फ्यूग स्टेट होता है जहाँ तुम सॉर्ट ऑफ कॉन्शियस अनकॉन्शियस के बीच में लटक रहे हो एंड यू आर लाइक बवाल आइडिया है ये. That's very interesting. फिर सबसे मुश्किल होता है उस समय उठ के लिखना उस चीज को. Of course. सुबह लिख लेंगे, बट सुबह तक भूल जाते हो यार. सुबह तक रहता ही नहीं है. ये यार मैंने ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुमने बोली कि यू नो हाउ यू गेट मोस्ट इंटरेस्टिंग आइडियाज कम अप टू जस्ट बिफोर स्लीप. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पर वो फिर लिखना नहीं होता, सो इट जस्ट गोज टू लिखा करो यार थोड़ा सा. you'll make the next big thing maybe, you know, in that आधा स्लीप, you know. you never know कि कौन सी बवाल आइडिया आ गई है जो तुमने लिखा नहीं है. Also dreams are interesting that way anyway. Like dreams में कभी अलग ही फिल्में चल रही होती है भाई. Definitely. I'm like which are far better than most of the films that I've seen. So I'm like इसको कहाँ से लाऊं? I think probably at some point in the future there would be technology which would record dream. अरे आ ही गया यार आजकल. तो मैं कुछ ऐसा सुन रहा हूँ कि आपके ब्रेन में जो है वो AI के मदद से project on the thing. You can project and it can read your thoughts, like whatever you're thinking. And that's not exactly it. So वो मेरे को लगता है rats पे या cats पर किसी पे experiment करा गया था जहाँ उनको एक picture दिखाई गई थी and उनके जो भी MRI scans करे गए थे and then it could sort of get it कि अच्छा क्या है, sort of blurry sort of image बना सकता था, but that's just a image. So it's not as but good the quest right of that has been started. Like it started. Yeah, so probably like films are dreams, whatever. At some point होगी शायद यार कि तेरे सपने तू फिल्मों की तरह रिकॉर्ड करके रख सकता है. And I'm not even sure, but I guess there's a movie on that. I'm sure there's a movie on that. There is. अरे अकीरा कुरोसावा की एक फिल्म थी, मैं फिल्म का नाम भूल गया बस. It was about these dreams that he had. Even that, right? वो कौन बंदा था जिसने सैल्वाडोर डाली उसने और उस बंदे ने बनाई थी वो उनका ही सब. हाँ, सो उनने बनाई थी वो भी. It was essentially a dream. Right. Did you see that film? हाँ मैंने देखी थी वो. हाँ मतलब कुछ विजुअल्स तो सिनेमा में बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना कि ये तो है ही. या डेफिनेटली. अभी ये नहीं जानते तो तुम फिर नहीं हो. वो ऐसा चांद आता है चांद उसके बाद you know what's and अरे I saw that visual मेरे बड़े भाई ने दिखाई थी. वो असली बकरी काटी थी उन्होंने. हाँ असली बकरी काटी थी उन्होंने. मेरे भाई ने दिखाई थी वो. मैं बहुत ही छोटा था एंड वो ना बैठ गया यार जहन में कि यार ब्लेड से ये कट रहा है, ये क्या है ये. तो यार मतलब and I was always intrigued about it. Then when I studied films and I got to know that अच्छा it was Dali and Buñuel they did. पुराने टाइम पर ऐसे करके निकल जाते थे. पता है there's this censorship. हाँ, और animal cruelty bro. There's this film called Pink Flamingo जिसमें पता नहीं एक विजुअल था, एक बंदा इज प्रॉब्ली फकिंग अ गर्ल एंड बीच में वो आई डोंट इवन नो इनका मतलब क्या होता है इन विजुअल्स का, बट बीच में वो एक चिकन लेता है एंड ही पुट्स इट इन बिटवीन द गर्ल एंड हिम एंड इज फकिंग द गर्ल एंड द चिकन इज अलाइव
मतलब weird ही है भाई. Well, it's a weird world. And like पहले कुछ भी चलता था. Yeah. What are the weirdest films you have seen? What is the Not necessarily animal cruelty वगैरह, but weirdest. Weirdest. I think it's something so difficult. Whenever people ask me what's the saddest film you have seen, or what's the weirdest film, or what's the most what are the films that made you so angry, when you specify it, no, यार मैं कभी भी बोल नहीं पाऊंगा. अच्छा. मतलब बोल शायद पाऊंगा, but I'll take some time. Interesting बता देना, not necessarily weirdest. जैसे कि मैं तेरे को बताता हूँ एक जो I found really interesting. There's this film called Holy Mountain, which is film की story जो भी है, एंड तक फिल्म खत्म होती है, एंड देन इट zooms out and you can see the film crew and you can see the director and then they remind you भाई ये फिल्म है. तो many बहुत सारी चीजें ऐसे ही यूज हुई हैं. हाँ, so ये बहुत फिल्म मेकर्स ऐसे करते हैं to just break that wall. हाँ, मतलब एक तो हो गया Fleabag जैसे breaking the wall, which is like straight into the camera and all. Yeah. मैंने वो देखा था यार, तूने शेयर करा था probably Twitter पे, which is The Shining वाला. Oh, it's creepy as fuck, right? Yeah, I'm like, it seems कि of course it's not कि वो coincidence था. Yeah, coincidence. Intentional लगता है वो. Exactly. But again, just at times 1 frames, at times 3 frames, at times 4 frames. I'm like, what was even the meaning of it? Like, yeah, I mean, did you deduce something from it? No, I I read the whole thread, bro. Yeah. And नीचे लोग लिख रहे TLDR भाई. Yeah. Too long didn't read. Yeah. क्या यार? No, so for the people who don't know what we are talking about. हाँ, explain कर दे. Yeah, it's about there was this Twitter thread that I retweeted that day, the other day. Some person pointed out that throughout the entire runtime of Shining, there are moments where Jack Nicholson's character is looking at the screen, like looking at us, and not like necessarily looking at the camera, but looking at us. You know, there is एक चीज अलग होती है कि चलो जो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट होता है वहां तो कैरेक्टर देखेगा कैमरा पे, बट दैट द थ्रेड डजंट टॉक अबाउट दैट. शाइनिंग में भी है एट वन पॉइंट. है ना, काफी है. बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी शॉट्स एंड मेनी सीन्स वेयर यू कैन सी जैक निकल्सन 1-2 फ्रेम के लिए he is looking at the camera, so it's like if we are talking so he goes like just like that, you know. Not so even like, that bro, उससे भी जल्दी कर yeah, उससे भी जल्दी. And you know, so some person pointed out that ये 1-2 बार नहीं होता है, ये फिल्म में बहुत बार होता है, and they interpreted some meaning out of it, this and that. And also we can know कि it's probably intentional, क्योंकि वहाँ नीचे फिर वो भी है स्टैनली कुब्रिक का एक वीडियो भी जहाँ he's saying him to look down into the camera. Axe वाला जो scene होता है, like just look down. Yeah. So you know, I mean it might be intentional, but we still don't know कि क्या सोच के वो किया है. हाँ, मतलब एक जन ने शायद breakdown करा था about कि he's looking straight to the audience कि even तुम मेरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं हो. It's like I'll get you next, you know, kind of a thing, which is interesting, but then again like really weird कि nobody has noticed that. Yeah, it is. And there's also a theory. I think it's in that thread only that the only people, usually Jack is looking over everyone else in the hall, but there are people looking over Jack, which are the ghosts in the hotel, you know. So there's this theory that we as the audience are probably the ghost who is looking over Jack. Interesting, you know. And it's giving me goosebumps as I'm saying it, and it's weird as fuck, man. It's like The Shining is probably the only film, it's very rare for a film to be better than the book. And people talking about films rather than the book from which it was made. Right. And Shining के केस में वो होता है. Right. And which the only other case जहाँ ये होता है is probably Fight Club 2. Right. Which is the film is more famous than the book. Right. But so about weird films like that. This was really weird. So उसके तरह I think there was this one film that I saw on Netflix. It was by this filmmaker called he's a Bengali filmmaker called Q.
He made this film called Brahman Naman. It's on Netflix and it's, I've heard of the film. yeah, it's one of the वो तब था, ये फिल्म तब आई थी जब Netflix इंडिया का नामो निशान नहीं था. अच्छा. हाँ कि तब Sacred Games and ये सारी चीजें नहीं आई थी. ठीक है. तो तब मैंने देखी थी यार. मैं तब उतना बड़ा भी नहीं था, लाइक तब था. And it was about 4 people and mainly one boy in the 60s and 70s. And his sexual misadventures in his 60s. Acha, he was in 60s. In the 60s, Acha, not his 60s. Yeah. It's about his sexual misadventures. How he discovers many things about his own body, you know, and puberty hitting basically. But वो थोड़ा crazy बंदा है, मतलब जो हमारा protagonist है. So that was one film that really I was like, what the hell is going on? You know, that's one film. How does he experiment with his sexuality, like 60s में? यार मैं वो बता नहीं सकता यहाँ पे. अच्छा, वो बता नहीं सकता. So it's like I'll have to go really explicit for that. And it's मतलब format का कोई issue नहीं है until unless तू self censor करना चाह रहा है. Yeah, I mean I'd probably not even say it. It's so that's why इसलिए बोलना it's so weird. कि मुझे जब देखा मैं like wow, what even is that, you know? And that generates enough curiosity for me to watch it. And probably किसी और को भी शायद देखना होगा. Of course, definitely. I mean, watch it. It's in fact all of Q's films. There's one film called Gandu that he made. That I've heard. Yeah. Abhi recently probably some that's also on Netflix only, I guess. So there's one film that he made where say, and also he's made many other films. Bengali filmmaker. And उसकी फिल्में होती हैं यार, ऐसा उसका फैक्टर होता है कि थोड़ा सा माइंड फक, you know. बंगाल में एक्चुअली काफी अच्छी फिल्में निकलती है यार वहाँ से. यार मैं तो मतलब बहुत वो भी निकलता होगा. मतलब मैं तो अभी डिसाइड नहीं करता. हाँ एक टाइम था जब even recent times में यार, like how recent are we talking about? like पिछले 10 साल में बहुत सारी फिल्में निकली है शायद. I don't think so यार. Not like there are few filmmakers, yes. Some filmmakers that I really like currently were working are there is Kaushik Ganguly. There is another filmmaker called Aditya Vikram Sen Gupta who made Jonaki, Asha Jar Maje. Recently he made once about Jonaki. Sort of worked for me, sort of didn't. Asha Jar Maje I really liked. And his latest feature, which is Once Upon a Time in Calcutta. I absolutely loved it. And so यार ऐसे गिने चुने लोग हैं. Because वही बात है. I think Bengali cinema and art and culture, I think it has been hyped up so much. You know. And me coming from a Bengali household, I can confirm that. So I have, I'm not as in touch with the culture, like so that it'll totally get over me and influence me. So I can have an objective point of view, and I've seen. It's I mean, if I go further, I'll आपकी जो बंगाली ऑडियंस है वो देखी ही नहीं. भाई मेरे बंगाली ऑडियंस कितने हैं मेरे को नहीं पता. तो I can go on about why this downfall has happened. That's interesting to probably work with. Why this downfall happened? Because I think there is Bengali people after a point of time got so self-obsessed as a community with Tagore, Ray, Mrinal Sen, Ritwik Khatak, that after that you rarely see originality. I rarely saw originality in Bengali films that came after that. It was basically वो ऐसा उन्हीं के influence थे. हाँ एक hangover था. हाँ कहीं तो एकदम डायरेक्टली था. It's like साउथ में बीच में वो आया था ना कि ज्यादातर लोग ही फिर टेरेंटिनो जैसे फिल्में बनाने लगे थे. तो वो एक हैंगओवर रह गया है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज नो वन एक्सेप्ट. वो ईगो आ जाता है. एंड वो कम्युनिटी एंड इट्स ऑल जो भद्र लोग का कम्युनिटी है ना, जो कि ये सारे आर्ट फिल्म्स को एसी रूम में बैठ के सिगरेट हाथ में लेके जो एनालाइज करते हैं टैगोर की कविता को और ये वो, इनका स्पेस इतना टाइट और इतना if you analyze those spaces, they're actually very regressive. अच्छा. Unlike what their pehnawa and what their big ideas about
about big philosophies about cinema and life or politics are. Also, if you're in a close knit group and you're basically self masturbatory, then फिर at some point echo chamber बन जाता है. echo chamber बन जाता है. Which is what works with a lot of stand-up comedians even, right? कि I agree. Yeah. मतलब at some point they're really good. We discussed, I think. Yeah, we discussed this that day. And then फिर success मिल जाती है, probably start hanging out with other comics, right? Not real people. I mean, they are real people, but still not like people who they are making art for. Yeah. Then at some point they lose touch with reality. Right. Which is what I'm guessing कि फिर in elitist groups में होता होगा. Right, and I think वही बात है ना कि inclusivity है ही नहीं. Inclusivity कहीं पे भी नहीं है, मैंने मुझे दिखती नहीं है. It is एक particular strata के लोग अपना आर्ट बना के, अपने आर्ट को प्रेस करके, अपने ही आर्ट को क्रिटिसाइज करके वही वो कर करके मर जाते हैं, है ना. तो आप जब माइंड से ब्रॉड हो गए, आप वाइडन हो गए, आपको तभी क्रिटिसिज्म मिलेगा. आप देखिए तो पूरी दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में. बट नो, they are too obsessed with Tagore, and they are too obsessed with Ray, and they are too obsessed with a Ghatak or a Sen to just move on, and no hate towards that. I grew up watching their films. So much I've learned from them, be it the poetry, be the cinema, whatever they've spoken, the books they've written. I'm hugely influenced by them. But आप जब उनको मसाया बना लेते हो ना, और उससे ऊपर जा नहीं पाते हो, तब ये हाल होता है. अभी इसलिए मुझे I think that the Bengali film industry is really, it's like अब डाउनफॉल गया क्या हो चुका है. बहुत कम ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो कि मैं डिस्टिंक्टली बता सकता हूँ कि ये So if not Bengali industry, like it's probably not better to ask about कि अच्छा ठीक कौन सी इंडस्ट्री तेरे को लगती है, but still कौन से पार्ट से तेरे को लगता है फिल्म मेकर्स आर कमिंग जो काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है कि अच्छा यहाँ से काफ़ी सही चीज़ें निकल रही है, which is like fairly new. I think probably for me मलयालम सिनेमा yes, but मलयालम सिनेमा में पॉलिटिक्स बड़ा ही कॉन्वल्यूटेड एंड उनका वो बड़ा ही डाइल्यूटेड रहता है. तमिल सिनेमा में बिकॉज उनके वहाँ पे द्रविडियन मूवमेंट एंड दिस एंड दैट, currently I'm so much interested and I so much follow that with filmmakers like Paranjit and Mari Selvaraj. These Can you just people, mention some films of theirs? Paranjit made Kala, he made Kabali, he made Sarpatta Parambarai recently. He's making another film with Vikram that's coming, Thangalan. Tangala, I don't know if I pronounce it right. Pronouncing it wrong. Yeah. So that Mari Selvaraj made Asura. Asura was made by Vetrimara, who's also from Tamil cinema again. Mari Selvaraj made Padiyedum Perumal, and then he made another again with Dhanush, Karnan. I don't know if you... Karnan I've seen. Yeah. So these are some filmmakers that are really, they are speaking about their community. The entire echo chamber of a particular strata of people, of a particular class or caste, have been broken open, and they are now telling stories of their own people with enough dignity. Because if you see, often the oppressed caste, the Bahujan people, whenever their stories are told, it's mostly by people from the upper caste. For sure. Because filmmaking is एक ऐसा माध्यम बन चुका था जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा के लोग ही, एक पर्टिकुलर कास्ट या क्लास के लोग ही एक्सेस कर सकते थे, है ना. तो वो चीजें अभी भी हैं, अभी मैं झूठ नहीं बोलूं, अभी भी है, अभी भी उसमें बहुत आप देखोगे चीजों में. Is it systematic though? Yeah, it is. Is it there for a reason? Is it something that the industry is involved in and probably Definitely. not letting those people in? Industry is not detached from the society, right? Things like casteism or Islamophobia, these are very well prevalent in the society right now. It's rampant. How will it not seep into the industry? Tell me. How will it not? You go to the sets and there are hierarchies. You can see it completely. Because I haven't worked. Yeah. You've probably been there. So no, worked there. However much I've seen, I haven't also इतना भी sets का काम नहीं किया है, या फिर many of my friends have worked in many sets and this and that, big budget sets, and you see a lot of hierarchy. Because me setting here, I would think probably urban India में casteism won't be much of a thing. I would assume that.
बट देन फिर प्रॉब्ली शायद वहाँ जिनने वर्क करा है दे माइट हैव नोटिस समथिंग मोर. I don't agree because I think casteism ये एक narrative हमारे दिमाग से हटा देना चाहिए कि casteism is a thing of the villages. No. It's very well, it's rampant in urban areas. People will not spell it out. I am a casteist. They won't do it, but there are many markers or indicators of it. You know? Like what? I have gone to many friends' house. मैं देखा मैं सबको ग्लास के प्लेट में सर्व कर रहे हैं, बट एक अपनी मेड को जो है स्टील का कप दे रहे हैं. कुछ बोल नहीं रहे, मेड से बड़ा खूबसूरत से बात कर रहे हैं. अच्छा दीदी कब आओगी, आप क्या करोगी, बट फिर भी स्टील का कप, स्टील का प्लेट. कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पर समझ में सबको आ रहा है. Casteism in these small ways is rampant. ठीक है. I see it in I see it in my house. I come from an upper caste family. I know so much. So वो एक दिखता है, वो छोटे से जब आप चीजों को एनालाइज करते हो, जब आप खुद के प्रिविलेजेस को देखते हो ना, कि मैं सर से पैर तक कितना कास्ट या क्लास या रिलीजन या फाइनेंशियल प्रिविलेजेस में डूबा हुआ हूँ, तो आप दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो, है ना. So in my family, in my friends' families, in schools, in colleges, अब देखिए ना, लॉकडाउन में कितनी खबरें आ रही थी कि जब वो जो लोग क्वारंटीन हुए थे उन लोगों को खाना सर्व करने के लिए, जब कुछ लोगों को पता चला कि वो खाना जो है एक कोई नीचू जाति के इंसान ने बनाया था, उन्होंने वो पूरा खाना फेंक दिया. कोविड के टाइम पे जब इंसान खाने के लिए तरस जा रहा है, इंसान एक ही चाह है इंसान की कि मैं मरूं ना, कि मेरे चाहने वाले मरे ना, फिर भी कास्टिज्म छूट नहीं रहा है. मतलब मौत के ऑन द फेस ऑफ अ डेडली वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक, इवन देन यू कैन नॉट लेट गो ऑफ दैट प्रिविलेज, यू कैन नॉट लेट गो ऑफ दैट बिगेट्री. That is वो हालत हो गई है. When there's so many things happening, I think it's not restricted to villages, and also, I mean, what we were talking about, I think there are people like Paranjit, or the ones that I mentioned, Mari Selvaraj, be it Neeraj Ghaywan, even Neeraj Ghaywan, yeah, Masan, Gilli Pucci, Juice, bro, Juice. Definitely. That glass thing. Yeah. So you see, Juice, it's about Shefali Shah and this and that, and how she takes in her own agency, and there are so many things. But still manages to put that in. But Neeraj, that is where the perspective comes in. Neeraj Ghaywan still manages. That is, you know, feminism is nothing without intersectionality. For sure. Feminism without intersectionality is just women from a certain class or caste, from the upper class, patting their own backs and like, oh yeah, go queen, and I support you, and this and that. It's just that without intersectionality. बिना intersectionality के feminism का पूरा मूल ही खराब हो जाता है मेरे लिए तो, for sure. जो नीरज गेवान ने इवन गिली पूछे में काफी brilliantly, बहुत खूबसूरती से उन्होंने वो intersectionality उन्होंने explore किया. And वो जूस में वो जो क्लास वाला सीन है, you know, you see that casteism is still there. Even though the story is about her, you see her, the bigotry inside her as well. वो क्योंकि systematically, it's not the question of you're a bad person or you're a good person. Systematically, casteism has been put in with rituals, with gestures, and that's there. Yeah, to the point where you don't even probably realize it. Yeah. You don't even probably realize some words that you say they're casteist, you know. So I think at such a point, filmmakers like these they're coming up, and I think because you asked concept industry मुझे ज़्यादा hard है अभी, Tamil film industry, because I think what they're doing is they're occupying their space. It's because they are talking about, caste has never been mentioned in mainstream cinema. It has always been reserved for art house cinema. है ना, कि आप देख लो, I mean, Shyam Benegal, Satyajit Ray, they have been huge influences, but you see, whenever they have dealt with caste, there has always been ऐसे tilted down view, कि लोग इंसान eye to eye नहीं देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, because they themselves are from upper caste, you know, and उसी नजरिए से
आप सत्यजीत रे की सदगति देख लीजिए. Satyajit Ray himself an upper caste person making a film on casteism, and Sadgati was adapted from Premchand's book, who was also an upper caste person. So you see, अब मैं Ray को critique करने जाऊंगा caste के lens से, you know, maybe I myself am an upper caste person. I myself come from so much of privilege. Maybe it's not the right place, but in the spaces where there are such discussions, अगर मैं ये बात छेड़ूं ना, especially in Bengali spaces, the ones that I mentioned. That is where you know why Bengali cinema or the society as in a whole is not going ahead, because they are so reserved. कि नहीं, कैसे हो सकता है हमारे यहाँ से एक इतना बड़ा डायरेक्टर जिसको ऑस्कर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है, और कैसे हो ही नहीं सकता ये. तो ये गलत बात है ना, दिस इज रॉन्ग. और आप ऐसा करोगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे आगे. मैं बहुत प्यार करता हूँ सत्यजीत रे को, पर मैं क्रिटिसाइज भी उतना ही करूंगा. परफेक्ट हो ही ना है वो. Yeah, and probably like you said कि Tamil cinema में representation is one thing that you really like. Yeah. And I feel कि dignity, we are not probably helping them in any way as such, as much it is good for filmmaking. Right. Because if they come, they would come with their stories. Right. Which are not spoken about. Right. So that would be really interesting if that happens. Right, definitely. And I think, I mean, continuing what I said, कि वो कास्ट का जो इशू है वो मेन स्ट्रीम आर्ट हाउस फिल्मों के लिए रिजर्व था. यू सी काला, आई थिंक दैट्स वेयर आई थिंक पारंजीत हैज taken out so much of his political views on caste and religion and so many things, you know, and it's an out and out Rajnikant flick. It's an out and out masala dhamal film, and that's important. कौन आर्ट फिल्म देखने, we need to understand the reality of India. कौन जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं आर्ट फिल्म देखने. वो आर्ट फिल्म एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिस्कस होंगे, कुछ स्कूल में पढ़ाए जाएंगे और उसमें उसी में चलता रहेगा. पर मेन स्ट्रीम जो हमारे मम्मी पापा, हमारी एक मेन स्ट्रीम जो जनता है, हमारी जो एक कॉमन जनता है, ऑफिस से थक हार के एक रजनीकांत की फिल्म देखने जाएगी ना. आप देखो रजनीकांत की इतना फॉलोइंग है. So that's a very smart decision, and that's a very important one also कि कास्ट का इशू को आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाओ, है ना, with different things, not necessarily spelling it out, but with different with the imageries of Buddha and Baba Saheb, you know, and with different stuff you bring the narrative forward because people are going to see it. More and more people are going to come and see it because Rajnikant is there. You know, there is a star power, and then there is your politics, and then both are merged. Your politics is reaching the right places, and the film पैसा भी कमा रही है. What do you think about Rajkumar Hirani, bro? I think he's one of the smartest commercial filmmakers there is. Because तूने जो बात बोली ना, that exactly Rajkumar Hirani does that. Mainstream films, mainstream as fuck. Yeah. But फिर वो उनमें एक्सप्लोर करता है अपनी थीम्स इस तरीके से. जो चीजें, जो क्वेश्चंस, वो एक आर्टिस्ट का रोल है ना. आप यू आर बॉदर्ड, एंड आपके पास एक आर्ट है एज अ वेपन. तो आप जितना भी जैसे भी कर लो, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप सोने से पहले आईना देखोगे ही, और वो आईने में आपका रिफ्लेक्शन आपसे पूछेगा कि व्हाट आर यू डूइंग, यू नो, एंड तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा. And I think Rajkumar Hirani knows his responsibilities as an artist who is not detached from the societal realities that he's living in. You know, I mean, there are many problems, and even in politics in Rajkumar Hirani films. But you know, Anand Gandhi ne bola tha ki his films are as simple as a WhatsApp forward, but they work. They work because he knows the craft, and he knows how to, you know, and he knows the audience. He knows the audience, and see. He takes the story of a goon, a roadside goon. He puts him in a medical college, and who would know that film would be about the loopholes that is in the medical colleges and the community and the infrastructure. Who would know कि गुंडे के स्टोरी से, है ना? PK एक alien. He has always loved the idea of misfit. Be it Munna in a medical college, be it PK, an alien in the earth, be it Rancho. Who is so restless and who is brimming with ideas in a disciplined environment. So जब ये misfit एक ऐसे environment में घुसते हैं,
वो एनवायरनमेंट के बारे में बहुत चीजें एक्सपोज होती हैं. मैंने ट्रोप कभी नोटिस नहीं करा था. Yeah. Probably now that you say it, I can Yeah. clearly see it. Yeah. It's कि probably अगर- writing trope Yeah. that he uses. कि अगर आप इस घर में रह रहे हैं, इस घर में और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको पता है इस घर में क्या बुरा है, क्या गलत है और क्या ये है, बट ओवर द इयर्स आप हो गए हो, मतलब यू आर ठीक है यार चलो जाने दो, लेट इट स्लाइड अंडर द कारपेट. पर मैं अगर एक नया बंदा मैं आऊँ इस घर पे एज ए गेस्ट और एज समथिंग, मैं तो क्वेश्चन करूंगा ना, अच्छा ये क्यों हो रहा है, अच्छा इसको ऐसा क्यों हुआ, अच्छा इसने इसको ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं इस एनवायरनमेंट से अवेयर नहीं हूँ. आई डोंट नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो राजकुमार हिरानी हैज ऑलवेज प्लेड विद दैट. हाँ. पीके वो पता नहीं इनोसेंस में बड़े बड़े सवाल करके. एग्जैक्टली इनोसेंस में ये कहाँ मिलता है, ये भगवान कहाँ मिलता है, हाँ. इसका बैटरी रहता है क्या, यू Yeah. नो. सो ही इज जीनियस इन दैट सेंस. काफी स्मार्ट है, काफी बहुत स्मार्ट राइटिंग. स्मार्ट आपको smart होना is the पड़ेगा. word. Also संजू, हाँ. which was supposed to be a biopic about Sanjay Dutt, हाँ. was about it also criticized tabloid journalism. Exactly. You know, हाँ. it was also about tabloid journalism. हाँ. ये जो सनसनी हाँ. केस. Yeah. और एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है, बाबा बोलता है बस हो गया, बाबा बोलता है बस हो जो गया. कि एंड में आता है. It's a हाँ. brilliantly written song. And it stars both Ranbir Kapoor and हाँ. Sanjay Dutt, sung by Papon. हाँ. And it's a very nice, and it encapsulates the entire media thingy that हाँ. Rajkumar Hirani tries to explore. हाँ. चलो इस फिल्म की भी कुछ अपनी दिक्कतें हैं, बट और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यार आप राजकुमार हिरानी कैन ऑल्सो बी क्रिटिक. देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई डोंट एग्री विद हिज फिल्म्स, बट ये एक चीजें But ये काफी appreciating कुछ चीजें quality बहुत है. स्मार्ट करता है वो. वो अनुराग कश्यप कांडो इज लाइक ठीक है यार. आई थिंक बनाएंगे, बट अनुराग कश्यप भी एटलीस्ट इट्स स्मार्ट इन द वे कि ही नोस कि अच्छा ठीक है मेरे को इतने बजट दे दो तुम, मैं इतने ही पैसे कमा पाऊंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा, मैं इतने में ही फिल्म बना रहा हूं. नहीं वो भी आई थिंक ही इज आल्सो वेरी स्मार्ट फिल्म मेकर. आई थिंक द वे ही हैज ग्रैब्ड, ही नोज द एंटायर फेस्टिवल सर्किट नो, एंड हाउ वो तो काफी ज्यादा वो इट्स इनक्रेडिबल. एंड ऑल्सो ही नोज हिज शिट. वो रुकता नहीं, वो बनाते रहता है फिल्में. So I think it's good here. I mean, of course, I have many complaints about his craft recently, but I'm still. चल एक्सप्लोर करते हैं जैसे. यार मुझे लगा कि ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत मैं देखी, मुझे बड़ी खराब लगी यार. भाई मेरे से देख नहीं गई वो, मैंने प्रॉब्ली शायद 15 मिनट देखे थे उसको. मैं हॉल में जाके देखा मैंने. शिट यार, मुझे बड़ी खराब लगी. सॉरी फॉर यू भाई. मुझे बड़ी खराब लगी यार. मैं लाइक हाउ इन द वर्ल्ड. ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग था, पर ट्रेलर भी मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा. मेरे को ट्रेलर प्रॉमिसिंग लगा था. मुझे क्योंकि ट्रेलर प्रॉमिसिंग नहीं लगा, मुझे लगा कि चलो पिक्चर थोड़ी तो कुछ होगी. अच्छा यार मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि ट्रेलर बढ़िया नहीं है तो फिर बढ़िया इसके लिए चला. अच्छा यूजुअली चल रहा है, इसके लिए चला. आई वाज रेडी टू गिव कश्यप अ चांस बिकॉज ही वाज आल्सो मेरा मेन अट्रैक्शन टू सिनेमा में. उसका गैंग्स ऑफ वसीपुर का भी एक बहुत बड़ा रोल था, या फिर ब्लैक फ्राइडे, या फिर गर्ल इन येलो बूट्स. ये सारे देख के मैंने इनिशियल फेजेस में ये सारी फिल्में देखी एंड बहुत इंस्पायर्ड भी हुआ हूँ. मुझे बहुत अच्छी भी लगी, अभी भी लगती हैं. तो वो क्राफ्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसिंग है. पता नहीं, मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि क्या है क्या नहीं. मैंने कैनेडी का ट्रेलर देखा, लाइक प्रॉमिसिंग बहुत ज्यादा, बट देन फिर इवन कांस में लाइक 7-8 मिनट के जो स्टैंडिंग ओवेशंस, व्हिच इज लाइक आजकल काफी मिलने लगे हैं ना यार. ये तो हर एक दूसरे फिल्म को यार 7 मिनट 8 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन चूतिया नहीं लगता. वो तो अभी तो वो पीआर स्ट्रेटजी हो गया है ना मोस्ट प्रॉब्ली, कि ऐसा आएगा कि 7 मिनट्स का स्टैंडिंग ओवेशन. और वो एंड कश्यप आल्सो वेरी वेल नोज इट, दैट्स व्हाई ही डजंट बोस्ट. बाकी लोग बोलते हैं, वो उसको भी पता है ये पीआर स्ट्रेटजी है. जैसी भी फिल्म है वो है. बाकी मैंने लाइक शायद किसी ने देखा हो कि किसी फॉरेनर ने रिव्यू करा था. आई वाज द रिव्यू एंड ही वाज लाइक ऐसा ही नहीं है कुछ खास. हो सकता है लाइक नहीं भी हो सकती है, बट देन फिर मेरे को वो इंटरेस्टिंग है कि इवन इफ इट्स अ बैड फिल्म, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड फिल्म, आई वुड प्रॉब्ली वॉच इट, बट इवन इफ दैट्स द केस, ट्रेलर काफी बवाल काटा था उन्होंने. और क्या खूबसूरत काटा है यार. हां, एंड आई थिंक ही इज बैक इन हिज फॉर्म नो. हां, यू नो काइंड ऑफ ही इज लाइक. सो आई मेरे को लगता नहीं यार अनुराग कश्यप stick to a genre as such. Yeah, I understand. जैसे कि चल मैं कह रहा हूँ कि the way he writes his humor, the way he writes his characters, I think वो मैं genre की बात कर भी नहीं रहा हूँ. देवदी देख लो आप. हाँ. मैंने मनमर्जिया काफी एंजॉय की. मनमर्जिया ब्रो, मैंने बहुत इमेजिन की अनुराग कश्यप would make मनमर्जिया out and out romantic film. पर मैंने बहुत एंजॉय किया. Exactly. So काफी I think the way he plays with songs यार.
आई थिंक म्यूजिक बहुत। प्लेस अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल. बी देव दी मनमर्जियां, आप देखना तापसी के पीछे जो है हमेशा जब गाना बजता है तापसी के पीछे दो लड़कियां, दो ट्विंस डांस करती रहती हैं. एंड वो उसके सारे फिल्म्स में वो एलिमेंट्स, इवन देवडी में बीट दो द लोग बार ऐसे कर रहे हैं. डांसर, हाँ यार, कुछ वियर्ड सा वो कर देगा, किसी दो लोगों को बैठाया होगा सड़क पे, बोलेगा काले चश्मे पहन ले, हाँ, बैठ जा बस, हाँ. कैमरा की तरफ देख लियो. एंड लाइक ये इंटरेस्टिंग चीजें करता है यार वो काफी. आई थिंक उसकी लास्ट अच्छी फिल्म जो मुझे लगी, बहुत बढ़िया लगी जो मुझे, वो थी मुक्काबाज. मुक्काबाज. I've seen it twice in the theater. वाओ, ग्रेट है, मुझे बहुत बढ़िया लगी. And दोनों बार अकेले भाई. आई थिंक बड़ा खूबसूरत. एंड द वे ही स्टार्ट्स द फिल्म विथ भारत माता की जय एंड एंड्स इट विथ भारत माता की जय, बड़ा खूबसूरत सा एक आर्क आता है. And people bashing you and yelling Bharat Mata ki jai. हाँ, it starts with a group Just of the people dichotomy bashing of that. और it starts with a video recording. तो वीडियो रिकॉर्डिंग हाँ. देखते ही ना आप थोड़ा सा दिमाग में हिल जाते हो. हाँ. क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप का जमाना है, इतने लिंचिंग के खबर आते रहते हैं. हर रोज मेरा एक नया वीडियो आता है कि कोई ना कोई अक्रॉस रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से कोई ना कोई लिंच हो रहा है. यू नो, तो इट स्टार्ट्स विद अ वीडियो रिकॉर्डिंग एंड के ग्रुप ऑफ पीपल, यू नो, और आपको डिस्टेंस सुनाई दे रहा है, क्लियर भी नहीं कि बोल भारत माता की जय बोल. एंड एट द एंड श्रवण, आई थिंक श्रवण नाम रहता है उसका, एंड ही इज बीटिंग जिमी शेरिल्स कैरेक्टर व्हेन ही इज सेइंग के चल ये ले अभी, चलो यही बोलना है ना, ये बोलने से माफ हो जाएगा ना, चलो ये मैंने ही बोल दिया इन अ वेरी सैटारिकल टोन. एंड दैट इज, वो स्मार्टनेस नहीं है तो क्या है? वो स्मार्टनेस नहीं है तो क्या है? दैट इज इन अ क्लाइमेट लाइक आवर्स, आपको पॉलिटिकल बात करने के लिए स्मार्ट होना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा. आउट एंड आउट कर नहीं पाओगे. फॉर श्योर. लाइक आई एम श्योर ज्यादातर फिल्म मेकर, ज्यादातर नहीं बट प्रॉब्ली द बेटर वंस वुड फाइंड अ वे टू डू इट. ईरान देख लो, ईरान देख लिया. हाँ, एग्जैक्टली. ईरान, इराक में ये लोग, आई मीन द वे हमसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, बट दे स्टिल मेक इक्वली पॉलिटिकल फिल्म्स ब्यूटीफुली. एंड उनका क्राफ्ट, क्योंकि जब आपके, अगर मुझे आप बांध के रख दो ना ऐसे करके, और या तो मेरे पैर खुले छोड़ दो या हाथ खुले छोड़ दो या सभी बांध के रख दो, मैं और ज्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा जो है ऐसे जाके कुछ करने में, कुछ करके इसको खोलने में. आई थिंक ऑफ सम क्रिएटिव मेथड, यू नो. तो जितनी रेस्ट्रिक्शंस उन्हें दी गई है ना, दे कैन नॉट, मैं इससे ये नहीं कह रहा कि आप रिस्ट्रिक्शंस दो और सबको और तो अच्छी फिल्में बनेगी. ऑफ कोर्स दैट्स नॉट व्हाट आई एम प्रोपेगेटिंग. कह रहा हूं उनका जो स्टेट है, जो रिस्ट्रिक्शंस है यार. I was hosting a round table of budding filmmakers from across the country. There, I was shocked by this. I was talking to this very experienced filmmaker he was an old person, but he was a budding filmmaker. He started making film just. So he had made a queer film, वो subject वो था, and he. Upon talking, I got to know that he, Jafar Panahi, right? Yeah, I know Jafar Panahi. Jafar Panahi. Recently, he was released from jail. You know. ईरान में फिर वही सीन है ना यार, जेल में डाल देते हैं सीधे. वही. And he apparently has assisted Jafar Panahi for a very long time. अच्छा. And मैं ना वो college के लिए था. And this is an Indian guy? No. Iranian. Global round table था. अच्छा ठीक है. जो कि मैं host कर रहा था. From Sweden, from Germany, there were different filmmakers, and I was asking them questions. So वो college के लिए था. अब मैं ना मेरे अंदर तो मैं कूद रहा हूँ कि यार मुझे इससे इतने आई ऑल्सो हैव टू बैलेंस कि नहीं सबसे इक्वली सवाल पूछने हैं, इससे लगा नहीं रहना है, क्योंकि मैं जितना इंटरेस्टेड था पूछने में कि जफर पनाही वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर्स यार, एंड दिस गाय असिस्टेड हिम फॉर सो लॉन्ग, ही हैज सीन हिज अरेस्ट एंड ऑल. I want to ask so many things, so didn't get the chance to ask that much, but however much he told me, it blew my mind. So he said that यार हम फिल्म बनाते हैं, गवर्नमेंट से पैसा, और तो कोई प्रोडक्शन हाउस ऐसा उतना खास है नहीं. अगर हम गवर्नमेंट से अगर हम पैसा लेते हैं तो गवर्नमेंट को हमको एक कट दिखाना पड़ता है, पहले तो एक झूठी स्क्रिप्ट दिखानी पड़ती है, फिर एक झूठा फिल्म दिखाना पड़ता है. मैं बोला तुम लोग झूठा फिल्म बनाते हो एक अलग, बोला हाउ इज दिस पॉसिबल? है ये करना पड़ता है, छोटी मोटी फिल्म. Fascinating, man. That is crazy, man. मतलब मैं
आई थिंक मेरे साथ बाकी सारे फिल्म मेकर्स जो बाकी देशों से उनको रियलाइज हो कि यार हम कितने प्रिविलेज्ड हैं. इनको यू नो आई मीन वट एवर ही टोल्ड मी, जितना मैंने मुझे समझ में आया उससे, इनको यार एक अलग सी फिल्म छोटी मोटी बना के गवर्नमेंट को एक प्रीव्यू दिखाना पड़ता है ताकि क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा दिया, बोलेगी फिल्म दिखाओ. हाँ. अब जो फिल्म आपने एंटी गवर्नमेंट बनाई है वो दिखा तो सकते हैं, वो नहीं. हाँ. तो वो जो चीज है वो गवर्नमेंट के लिए अलग से बनानी पड़ती है आपको. फिर वो रिलीज कहाँ करता है? रिलीज फिल्म फेस्टिवल्स. अच्छा, ईरान में तो होगी नहीं. जाफर पनाही ने अपनी फिल्म टैक्सी, आई थिंक आई डोंट नो हाउ, टैक्सी था या कौन सी फिल्म थी. हाँ. उसने पेनड्राइव के थ्रू एक टिफिन बॉक्स में एक ब्रेड के नीचे ऐसा कुछ मैंने सुना था, उसने पेनड्राइव लेके अपने दोस्त को दी थी जेल से, अब हाउस अरेस्ट से, टू सेंड इट टू अ फेस्टिवल. ऐसा करना पड़ता है. एंड इट्स इंस्पायरिंग. इट इज सैड, यस ऑफ कोर्स इट इज सैड दैट आर्टिस्ट के हाथ पाव काट के आप आर्टिस्ट फिल्म भी चल रहा है ऐसा. नो वन डिजर्व्स दिस, बट इट्स ऑल्सो एट द सेम टाइम सो इंस्पायरिंग दैट द क्वेस्ट टू टेल truth and more importantly tell a story, because stories are all we have. वो आपको जब छोटे थे आप दादी माँ की गोद में वो आप पंचतंत्र की कहानियां सुने, या अभी उठ के आप एज यू ग्रो अप आप स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानियां सुने, है ना. स्टोरीज हैव ऑलवेज, बिकॉज इट्स वी अलोन कैन नॉट मेक सेंस ऑफ आवर लाइव्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट. Stories help us. They help us. They take our hand and they tell us, okay, maybe this is how you feel, or maybe they give us. There's the empathy of the highest kind. And that's where probably the responsibility comes in. Yeah. Telling good stories, telling stories that are worth telling. Stories, of course, they give meaning to your life. They probably help you make sense of it all, but they also form the culture, which is really essential. So. Do you think that art in general could just be self-expression? Yeah, apart from that too, you should be considerate, you should be responsible while making it, or could it just be a thing jahan it's just a space to express yourself? Just tarike se bhi. See, first of all, I am no one to say what art can or cannot be. For sure, but what are your ideas about it? My ideas are whatever I think. I think that I do have a responsibility as an artist because, again, not detached from the society. I very well live in the society and I very well want to talk about many things. I want people to talk about a lot of things. And I want to make films about that, which is also a part of my individual artistic expression. Yeah. I think that is what I think about art. That's interesting. Yeah. एक interesting चीज that I would like to ask you. Yeah. सुधीर मिश्रा ने क्यों ब्लॉक किया था यार? क्यों? क्या सीन था भाई वो? पहली बार सुधीर मिश्रा इज अ वेरी वेटरन फिल्म मेकर. आई लव्ड हजारों ख्वाहिशें, है ना. मुझे धारा भी बहुत पसंद है उनकी, है ना. और मुझे इनफैक्ट सीरियस मैन भी अच्छी लगी जो नेटफ्लिक्स में आई थी नवाजुद्दीन के साथ. ठीक है. अभी and he was one of the people who encouraged dialogue of people who of contrasting opinions, who always encouraged it. तो यार मुझे अफ़वाह के लिए मैं इंटरेस्टेड था, मैं गई, मैंने देखा, ठीक लगी मुझे. ठीक है. So even though it's political commentary is totally on the nose, the way it tackles the concept of love jihad and all that, of course, but it is at the end of the day, मैं हमेशा बोलता हूँ, it is cinema. हाँ. आपको अगर protest करना है, there are so many different mediums to protest, but why did you choose cinema? Because वो एक craft है, right? तो आप craft की respect तो करो. शायद उनके नजरिए से उन्होंने किया होगा. हाँ. मेरे नजरिए से craft बड़ा फीका पड़ गया उनको. See, again, he is getting old and the situation of the country is such, he doesn't know perhaps कि अगले कुछ सालों में मैं ये सारी चीज़ें बोल पाऊंगा भी नहीं या नहीं. तो शायद the quest of that has made him kiss बहुत सारी चीज़ें एक ही फिल्म में पैक करके दे दो. तो contextually देखने से it makes sense perhaps, but अगर मैं इसको individually देखूँ, no. I don't think it's a very good film. It's a decent film. ठीक film.
सो मैंने वही ट्वीट में मैंने लिखा कि यार कि आई रियली एडमायर सुधीर मिश्रा एंड दिस एंड दैट एंड आई थिंक Sudhir Mishra had replied to someone and the retweet was a quote retweet of that reply. So I had replied to that reply of Sudhir Mishra. So Sudhir Mishra had tweeted कि people say that अफवाह में nuance नहीं है. But how can you say कि अफवाह में nuance नहीं है जब ये कैरेक्टर का ये होता है, मैं नहीं बोलूंगा स्पॉयलर्स, बट ये कैरेक्टर का ये होता है और ये कैरेक्टर घूम के यही बन जाता है. तो वो अपने ही फिल्म को खुद एक्सप्लेन करके खुद ही बोल रहे हैं और खुद के ऐसे पैट कर रहे हैं, है ना कि एंड जेन्युइनली मुझे भी लगा कि उतने नुआंस का कोई जगह नहीं था वहां पे. एंड ठीक है, अगर आपको लगता है नुआंस्ड है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ठीक है आई एक्नॉलेज योर पॉइंट, इफ यू कुड फर्दर elaborate on that and this and that and maybe we could start discussion. He said यार लोग बोलते हैं फिल्म में nuance नहीं है यार, what could be more nuance than this happening and that happening and this happening. So मैंने बस tweet किया कि it's very sad that a filmmaker of his stature has come down to patting himself on the back. I mean, Afwa was a decent film because and you know बट मैंने वही लिखा कि स्लोगन मॉन्गरिंग अलोन कैन नॉट मेक सिनेमा. ठीक है, लिखा. कुछ दिनों बाद मैं अपना प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ एंड सडनली मैंने देखा ये सुधीर मिश्रा का ट्वीट मैं व्यू नहीं कर पा रहा हूँ. मेरा ट्वीट व्यू कर रहा हूँ नीचे ना, यार ये क्या है, उसने डिलीट कर दिया क्या? मैंने टैप किया तो सुधीर मिश्रा इज ब्लॉक्ड यू. अरे यार ये तो मतलब क्या करे अभी. ठीक है, वो एक्सपेक्ट मैंने किया नहीं था, बट देन perhaps when I meet him I'll tell him, या फिर उनका फोन चुरा लूंगा, अनब्लॉक कर. बैड जोक. प्रॉब्ली ऑनलाइन क्रिटिसिज्म के वो यूज तो नहीं होंगे अभी यार, पर वो खुद तो बहुत करते हैं ना. हाँ, खुद काफी करता है. खुद तो काफी ट्विटर में रहते हैं. हाँ, एंड खुद जेन्युइनली आई डोंट नो इफ इट वाज हिम और हिज टीम और एनीथिंग. I don't think कि उनकी टीम होगी. Yeah, exactly. ट्विटर चलाने के लिए at least. ट्विटर चलाने के लिए exactly. For someone who expresses himself so frequently. हाँ, I think. तो हाँ, वो एक दुखद घटना है. हाँ. तो वो अभी क्या कर सकते हैं. अभी मैं अकाउंट खोल के उनका ट्वीट देखूँ तो I mean sad but has happened. So their Twitter handle, Instagram handle, everything is actor साहब. Yes. So मैं अभी जो सवाल पूछने वाला हूँ, it's probably gonna be pretty obvious, but still, तू लिखता है, तू डायरेक्ट भी करता है, तू एक्ट भी करता है. What is probably, how do you identify yourself? सबसे बेस्ट तो किस पोस्ट में सूट करता है? देखो क्या लगता है, what are you good at इन तीनों चीज़ों में से? I think that I'm good at nothing. I'm good at none of these things, but you could ask me what I like doing. What do you like doing? Yeah, probably that works. I think यार तीनों में से राइटिंग थोड़ा कम, मतलब राइटिंग फॉर अबाउट फिल्म्स वो ओकेजनल होता है. मैंने फिल्म देखा, राइटिंग अबाउट फिल्म्स, ऑन फिल्म्स और अबाउट एनीथिंग ओकेजनल होता है कभी अगर वो हो गया. दैट्स व्हाई जस्ट वन मूवी जो मेरा थोड़ा सेल्फ प्लग इन प्रॉब्ली डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, कोई सीन नहीं है. तो वो जो मेरा पेज है दैट वाज क्रिएटेड जस्ट फॉर दैट कि मैं ना फिल्म देखता था एंड मैं बातें बहुत करता हूँ. सो फार इन दिस पॉडकास्ट लोगों को पता चल गया होगा कि मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूँ और बहुत चिल्ला के बातें करता हूँ. जब पता चला तो फिर you're dumb. तो आई मीन तो जब भी एक फिल्म देखता हूँ और अच्छी लगती है ना मुझे या बुरी लगती है, आई वांट टू टेल पीपल कि यार पता है कितनी घटिया फिल्म थी है, यार क्या है, कैसे क्या सोच के बनाया है फिल्म, यार कितनी बढ़िया फिल्म थी, तुझे देखनी चाहिए. अब सबका उस इंटेलेक्ट पे बात नहीं हो पाती है एंड दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन. मैं जिस नुआंसेस या जिस लेयर्स की बात कर रहा हूँ, सब लोग नहीं स्टडी करते फिल्म वैसा, सब लोग नहीं बात कर सकते वैसे, एक बेसिक बातें हो सकती है. बट आई वांटेड मोर देन दैट, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड एन ऑनलाइन कम्युनिटी जो कि इंस्टाग्राम में तब भी नहीं था. तो मैंने शुरू कर दिया जस्ट वन मूवी. देयर वर मेनी लाइक अभी तो सारे everyone has become very good friends, but at that point of time Gangs of Sinapur by Basundhara and by Humans of Cinema by Harshit, you know, and Fables of Film by Ankit, and these are very good friends now. I work with them now every now and then, and
they are, they were few of the, some of the few people who really इंडिया में इंडियन इंस्टाग्राम के सीन में जो सिनेमा का वो है वो लाने में, तो ऐसे कुछ कुछ अकाउंट्स का बहुत हाथ, एंड दैट इज हाउ वी ऑल बॉन्डेड ऑल्सो, क्योंकि तब ज्यादा कोई बातें नहीं करते थे फिल्मों के बारे में, करते भी था हॉलीवुड फिल्म, इंडिया स्पेसिफिक बड़ा कम होता था, एंड हम कुछ लोग ही थे जो बातें करते थे, तो ऐसे ही हम लोग हमने बॉन्ड किया एंड दिस एंड दैट. So that's why Just One movie was made, just to talk about. पहले मैं सारी फिल्मों की बातें करता इंटरनेशनल भी, बट उसके बाद I kind of saw the space it was going to and what people were responding to more and what I was good at more. So मैंने subcontinent पे and I broadened it, not just cinema. Every piece of art, poetry, songs I think about, I feel something, I write it. So that's why I think that's my take on writing. Filmmaking and acting is something that goes on simultaneously, now at least. I started with acting, and as I discovered my love for filmmaking, I thought that the love for acting will gradually fade away. It didn't. Huh? It didn't. It didn't. I constantly found myself acting, even in normal situations when no one is around. I'm just acting sometimes. I'm just running through lines of a movie that I just saw. अभी मैंने कल रात को देखी शूल, मनोज बाजपेयी है, सयाजी शिंदे है, वहां से मैं कोई तो लाइन था वो मैं बार बार जो है बोल रहा था या कुछ कर रहा था, है ना. मतलब बहुत लोगों का प्रोसेस होता है इवन इन राइटिंग वेयर दे डू दिस, जहां उन्होंने कुछ लिखा है दे एक्ट इट आउट. देयर इज दिस फेमस इंस्टेंस ऑफ there's this famous instance of Aaron Sorkin doing it, and उसने probably अपनी नाक फुड़वा ली थी just because he wrote something and he was acting it out, so he ended up like bumping into something and उसका नाक कट गया था भाई. फिर वो अपने दोस्त को फोन करके बोलता ये सीन हो गया, and he was like कि क्या कर रहा था तू? I was just writing. मेरे को क्या पता भाई, लिखते नाक फोड़ ली मैंने. So I am, because so much of my self expression also comes from acting. So I think I definitely, that is one aspect that I missed out on when I told about my process and how I write scripts. I also act it out. अच्छा. I'm also, अगर if I'm writing मैं वो बार बार how I want the characters to say it, that helps me a lot. अच्छा. So at script level ही characterization हो ही जाता है काफी. Definitely. एक अंदर ही अंदर हो जाता है, उसके बाद तो धीरे धीरे आप डेवलप करते हो. But when I'm first writing it, I act it out. And that's why मैं ना लोगों के सामने लिख नहीं पाता यार, कि कैफे में बैठ के and this and that. कैफे में बैठ के लिखना बहुत ओवररेटेड है. मैंने ट्राई करा और काफी बार होता मेरा नहीं. बाकी सारा काम कभी कभार हो जाता है मैं कहता हूँ, पर ये वाला काम नहीं कर सकता क्योंकि लोग देख रहे हैं मुझे और मैं अपने आप से ही बातें किया जा रहा हूँ, अपने आप से ही कुछ तो घुसा मारे जा रहा हूँ, कुछ तो गुस्से में बोला जा रहा हूँ या रोए जा रहा हूँ. कैफे में, बट अगेन कैफे में इट कुड हेल्प टू लाइक अगेन सम राइटर सेड दिस कि वो क्या करता है कि कैफे चले जाते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ लिखना होता है, बैठे बैठे लोगों की बातें सुनता है, पीछे कोई लड़ाई कर रहा है, एंड दे लाइक वहाँ कुछ किसी ने बोला जो बहुत इंटरेस्टिंग है as a standalone line, and now this person would be like, अच्छा इस जगह पर ये कहाँ से पहुँचे होंगे, let me probably form a story around it, ये line तक कैसे पहुँचे होंगे, and then start writing about it, and something comes out, which is a really interesting process. मैं try करा कैफे में, it's really fun. So yeah, I think observing people is it can give you so much. हाँ, but apart from that, अगर लिखने जाओ and you're starting afresh, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, then probably it's hard, but if you go with something जो तेरे को rewrite करना, it's still easier. It could work then. हाँ, so वो होता है. Yeah. So तू जिस कॉलेज में जाता है, is it like necessarily a film school? It's not necessarily a film school. It's a media school. हाँ. There are many things, many facets of media, many courses related to media. That is, so मेरा course खाली film का course है. Like it's a filmmaking course. And क्या difference है like film schools and media schools में, as in the practicality of it वो teach नहीं करते media schools? नहीं, because overall आपको मीडिया पर आ रहे हैं, मीडिया तो अलग अलग तरीके का हो सकता है. अच्छा, so it's not necessarily just films. Yes, exactly. But तेरा course filmmaking का around है. मेरा course filmmaking का around है. It's all film. So तेरा जो course है, is it necessarily different from if you would have gone to a film school as such?
I don't think so. I don't even think film schools are important as such. And definitely not important, but they would help, right? They do help. I mean, I'd recommend joining a film school just to get the sense of a community. You meet a Also, meet, थोड़ा सा सामने आ जा बस हाँ. माइक के. हाँ. you meet a lot of people. हाँ. You meet amazing people. Some bad, some good, some pretentious, some not, some genuine. And I think that experience is very rewarding and helps you. Not helps you, but even as a human being, it makes you grow. And आप जिस चीज़ों को चाहते हो, वो दूसरे जो लोग आप मिलोगे आप वहाँ, वो भी probably उसी चीज़ों को चाहते होंगे या आप creative differences होंगे. I think there's a lot of scope of growth there, but not as such in the studies. उसमें आप समझ जाते हो. हाँ, if you know nothing, then it's okay. But for अगर me, थोड़ी बहुत आइडिया है, हाँ मतलब आइडिया है तो मतलब आप किताबें पढ़ो, फिल्म के अलावा कुछ करो. फिल्म के अलावा कुछ करो. I mean, आप I think going to a set is so easy. Just get to a set somehow, even if it's for a like clapper boy, you know, get there. बहुत सीखने को मिलेगा. Yeah, exactly. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. हाँ, like I recently got out of a film. जो मैं बता रहा था तेरे को, that short film. 5 दिन का शूट था and like lot of things when you write, like ये तो चल दोस्त ने लिखी थी, but he told me कि his experience कि अच्छा ठीक है मेरी writing change हो गई है probably after I've made a film, a short film. I've shot it, अभी editing में, but after I shot it, the way I write is different. Because I now know कि अच्छा ठीक है मैं जो verbose writing करता था काफी ज़्यादा, it doesn't translate as such. Okay. Then फिर वो change हो जाता, which is such a unique insight. जो otherwise तेरे को मिलता ही नहीं कभी शायद. That's true. If you wouldn't have worked there. So as such तेरे को film schools, and you've also made short films, 2 or 3 short films, right? So what are the things that you've learned that are different? Like film schools में what are the things that you learned? And कौन सी चीज़ें हैं जो necessarily तेरे को short film बनाकर ही सीखी है तूने and you could have learned otherwise? फिल्म स्कूल में आपको ये सिखाया जाता है कि if you're that always you know keep your cameras charged. If आप कहीं ओवर एक्सपोज हो रहा है लाइट, आप उस चीज़ को कैसे कवर करोगे. पर जब आप फिल्म शूट करते हो तब आपको पता चलता है कि मिडिल ऑफ द सीन अगर एक्टर का ब्रेक डाउन हो गया तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे. अगर आपको गुस्सा आ गया किसी चीज़ पे तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे. हम एक इंस्टेंस बताता हूँ. हम एक फिल्म शूट कर रहे थे, मैं और मेरा एक फ्रेंड, और हमारे पूरा बैच से हम मैनी पीपल हेल्प्ड अस आउट इन दैट. वी आर शूटिंग अ फिल्म. वी रेंटेड अ हाउस फॉर 1500. 11 बजे से लेकर 8-9 बजे तक का हमारे पास टाइम था. वी आर डूइंग इट इन अ लिव्ड इन प्लेस. लोग रह रहे थे उस घर पे और हम शूट कर रहे थे. ठीक है. सडनली हमारे जो एक्टर थे, who was also our professor by the way, the protagonist was our professor. He volunteered to do that part. We were doing it independently of the college. Suddenly प्रोफेसर आते हैं, बोलते हैं अमरिक अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है. रोने की आवाज़ आ रही है. हाँ, आई डोंट थिंक समथिंग है. ठीक है. मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार देख ऐसा ऐसा है. क्या कहते हैं, रोने की आवाज़ आ रही है. सो एंड देन समवन सेड कि यार आई थिंक समवन हैज पास्ड अवे इन द हाउस. हाँ. नो, नॉट इन द हाउस. हाँ. इनके ही कोई तो रिश्तेदार हैं. शिट. दे हैव पास्ड अवे. ठीक है. सडनली द एल्डर बॉय यू नो कम्स इन एंड लाइक आप पैकअप कीजिए ये सब पैकअप कीजिए. लाइक पैकअप मतलब एक मिनट ये क्या अब हम See, we are also human beings, but we are also filmmakers. You know, not saying that filmmakers aren't human beings. They aren't. But, you know... disclaimer के बाद मैं सुनना चाहूँगा क्या हुआ है probably. So, you know, I'm like, sir, अब मैं पैसे की बात भी कैसे करूँ? हाँ. है ना, कि नहीं यार पैसे दिए हैं और कुछ बात नहीं, डेथ का सवाल है. बोले नहीं हमारा
कोई हमारे किसी रिलेटिव का इंतकाल हो गया और जनाजा उठ जाएगा, आप जाइए, आप लोग पैकअप कीजिए। तो मैंने बोला पार्थ क्या करे अभी, ये तो और आने नहीं देंगे। तो और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है फिर से घर अगर रेंट पे ले यार, और फिर से वो सारे इक्विपमेंट्स लाए, सब कुछ करे, पैसे भी नहीं होते। तो पार्थ बाय द वे पार्थ जिसके साथ मैं फिल्म बना रहा था, हु इनवाइटेड मी टू को राइट एंड को डायरेक्ट द फिल्म। अच्छा, या उसकी ओरिजिनल स्टोरी थी। सो दैट आल्सो विल फॉर्चुनेटली देखते हैं हम कि होपफुली इट विल बी ऑन सम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। वी आर स्टिल लुकिंग फॉर इट। इट्स कॉल्ड मिश्रा का मकान। अच्छा, या अगेन सेल्फ प्लग इन। पार्थ विल लव मी फॉर दिस, बट या सो पार्थ ने मुझे बोला सुन, मैं शॉट लेता हूँ, तू बाकियों को बोल कि बैग खोले और बैग के अंदर हाथ डाले और हिलाते रहे ऐसे कुछ भी ऐसे इक्विपमेंट्स, हाँ, ताकि लगे कि हम बैकअप कर रहे हैं। हाँ. तो हम बोल रहे हैं हाँ बैकअप कर रहे हैं, बट हम बैकअप नहीं कर रहे हैं, हम बस बैग के अंदर हाथ डाल के एक चीज यहाँ से वहां कर रहे हैं। तो फिर टाइम हो गया है, ये लोग हम ये दे रहे हैं उनको, निकल जाओ। तो ये छोटी सी, बाकी बहुत चीज, बाकी वो अभी सुनाने जाओ तो बड़ा लंबा कहानी है, बट अब ऐसी ये चीज फिल्म स्कूल नहीं सिखाएगा आपको। हाँ, कि इस चीज से कैसे डील करें, ये चीज कैसे डील करोगे आप, हाउ डू आप, इंसान बौखला जाएगा, डेथ इज इन फ्रंट ऑफ यू, इंसान बौखला जाएगा। हम एक जगह में शूट करने गए, जो हमारा लोकेशन मैनेजर था उसने बोला है कि आप जिस जगह पे कदम रखे ना, कल यहीं पे एक लाश गिरी हुई थी, मर गई यही आज सुबह खून। तो आप जब शूटिंग करोगे थोड़ा सा आप संभल के करना, ये एरिया ठीक नहीं है, ऐसी चीजें हुई है। तो कैसे, ये सब फिल्म स्कूल तो नहीं सिखाएगा आप, ये सब चीजें होंगी जब आप सेट्स पे जाओगे, जब आप खुद फिल्में बनाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सीखते रहना या पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू एक्टिवली डू इट and make the shittiest film people have ever seen. Yeah, it's like writing. Let the shit out. Yeah, make something very bad and you'll cringe on it, but you'll do it and you'll know. But जब तक नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा. Yeah, for sure. Yeah. Also, when you said this, I probably think a lot of filmmaking is probably people skills. Like dealing with people. Yeah. आप वैक्यूम में तो फिल्में नहीं बनाते ना. हाँ. आप तो एक समाज में रह के बनाते हो. तो अभी जो लोकेशन अंटिल इट्स अ सेट, नॉट जस्ट सेट यार, कास्ट एंड क्रू के साथ अगर आप सेट में भी कैसे बिहेव करते हो किसी पे फिल्म में, मेरे बहुत एंगर इश्यूज है मी एज अ डायरेक्टर। अभी तो काफी कम हो गया पर पहले बहुत एंगर इश्यूज है, मैं किसी पे भी चिल्ला देता था। अच्छा, सेट्स पे। हाँ, वैसे मैं बड़ा ही काम इंसान हूँ मैं, आई एम लाइक वेरी ऐसा, बट फिल्म सेट्स में मेरा लोग मुझे अलग ही देखते थे, मतलब मेरा कोई अलग ही डूब निकल जा रहा था। तो अपने दोस्तों के ग्रुप का संजय लीला भंसाली नहीं यार, वो तो एक्टर को बैक। हाँ, तो क्या कहते हैं, वो एक इशू था मेरा। अभी काफी इट हैज रिड्यूस्ड बिकॉज आई एक्टिवली ट्राई टू वर्क ऑन इट। तो वो सारी चीजें, पर है कुछ चीजें अभी भी मैं जिससे मैं स्ट्रगल करता हूँ सेट्स में। किसी पे गुस्सा आ जाए, कोई चीज छोड़ दे, कोई ज्यादा बातें कर रहा है। हाँ. अब आप उसको पूरे कास्ट के सामने, क्रू के सामने गाली दोगे तो वो जो है ना वो हमेशा याद रहेगा और उसमें इम्प्रूवमेंट से ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी उसको। हाँ, आपको गुस्सा आ रहा है, आप साइड में लेके जाओ, अगर सुन दिस इज नॉट डन, देयर इज अ माहौल, मस्ती करो, don't disrupt the filmmaking, don't disrupt my process. सब लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सब लोग डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तेरे को करना है तो कर, वरना निकल जा। सेम चीज अभी अगर आप चिल्ला के सबके सामने उस इंसान को बोलोगे तो वो सोचेंगे कि यार ये तो क्या है यार, मेरी इज्जत आपने उतार दी सबके सामने। तो डेफिनेटली पीपल स्किल्स, आप कैसे लोगों से बात करोगे, एक मैसेज को सेट्स में कैसे कम्युनिकेट करना है। एग्जैक्टली। अब ये चीज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरा सब कुछ सॉर्टेड है, खुद सॉर्टेड नहीं है, मैं भी ऑल आर लर्निंग, मैं भी डील कर रहा हूँ इन सब चीजों से, मैं भी आई एम जस्ट देयर आर दीज थिंग्स आर क्लियर इन माय हेड, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दिस इनटू माय प्रोसेस, सो देयर इज ऑलवेज दैट। हाँ, बट अगेन आज से 15 साल बाद प्रॉब्ली जब तूने 4-5 फीचर फिल्म बना ली होगी तो ये सेम बात ही बोलेगा। लेट्स होप, आई मीन अगर ना बोले ह्यूमिलिटी नहीं है तो फिर क्या ही सही है। बट ये सच है कि लाइक ये सारी चीजें प्रॉब्ली जस्ट अगर बैठ के तुम लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो फिल्म पे, नहीं आएगी,
लाइक बट हाँ एक चीज़ मेरे को एक्सप्लोर करनी है, जैसे सेम चीज़ मेरे साथ हुई व्हाइल वर्किंग ऑन दिस शॉर्ट फिल्म. वी रियलाइज्ड कि वी हैड अ नॉन एक्टर, ठीक है, एंड वन वाज प्रोफेशनल एक्टर, एंड इनिशियली वी वर जस्ट कम्युनिकेटिंग द सेम वे to both of them. कि अच्छा ये से ना ये से ना ये से ना, एंड later we realized कि अच्छा जो नॉन एक्टर उसको प्रॉब्ली अगर तुम बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी दो, it works better for him. Right. And probably with the actor you could go into the whole shenanigans of characterization, ये वो, and क्योंकि उसको पता है he's used to it, the non-actor is not used to it. तो अगर तो बहुत ही कुछ complicated feeling या idea उसको करने जाएगा, it would be like वो ज़्यादा सोचने लगे and probably कुछ और turn out कर जाएगा. So ये जो communication होती है actors के साथ, इसके बारे में मेरे को पूछना है कि ये तू कैसे handle करता है? Like how do you communicate with the actors? We already talked about this थोड़ा बहुत, but when you approach a scene, एक scene just shoot करने वाले हो, what do you do? Like actors को जाकर क्या explain करते हो? The emotion of it, क्या चल रहा है? What do you do? See, exactly. It really depends on the actor. At this point of my life, it's personalized to each and every individual. Definitely. At this point of my life and in my journey of making films, there are few people whom I blindly trust कि उनको ये सारी चीजें बोल दूंगा वो लोग कर लेंगे. So एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इवन आफ्टर टेक दे डोंट गेट द थिंग राइट. सो आपको छोटी चीज़ें भी समझा के देनी पड़ेगी. तो एक चीज़ जो कि जिसमें मैं टाइम लेता हूँ और जो मैं आई वॉन्ट इट टू बी परफेक्ट इज़ माई कास्टिंग. क्योंकि आप अगर कास्ट सही करोगे तो ये एक प्रोसेस हल्का सा आपके लिए ईजी हो जाएगा. प्रॉब्ली हल्का से बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब ईजी हो जाएगा. क्योंकि आप एक इंसान को जैसे मैंने एक फिल्म बनाई थी with Parth and a very well-meaning friend of mine, Tisha, both classmates. It was called Bijli. It was about a quarrel between a husband and a wife. है ना कि वाइफ जो है अपने मायके से घर आ रही है और उसने देखा कि हस्बैंड ने घर जो है उधर पुधर करके रखा है, and it's a quarrel between them. It was just a conversational. So, and मुझे इन दोनों की पर्सनालिटीज मुझे पता थी. टिशा जो है, टिशा वो यूजुअली एक्टिंग नहीं करती, वो शी इज इनटू द मेकअप इंडस्ट्री. ओके, बट मैं उससे बात करता हूँ और वो मेरे हम मतलब ऐसा जो उसका पूरा बुआ एनर्जी है, ठीक है. तो मुझे ऐसे मारती रहेगी, कुछ भी करती रहेगी और ताने देती रहेगी, है ना. तो उसका वो एनर्जी है एकदम, ठीक है. मेरे ऊपर चिल्लाती रहेगी, मैं भी उसको परेशान करते रहूंगा. ऐसा एनर्जी है हम दोनों का. तो मुझे पता है इसको अगर गुस्सा आता है तो वो कैसे बातें करती है, वो भड़क जाती है पूरा. तो मैंने टिशा को बोला, यार टिशा देख, ये एक है स्क्रिप्ट, ये ना मैंने तेरे को वो करके रखा है. टिशा ने बोला यार ये ना तुम फिल्म मेकर्स का है, सबको बोलोगे तुमने तेरे को सोच के ये लिखा है, ये आई एम नॉट लाइक नो. अगर तू ना बोलेगी ना मैं ये करूंगा ही नहीं, लेजिट. अगर तू ना बोलेगी, अगर तेरे को सोच के नहीं लगा मैं किसी और को ले लूंगा, पर तू ना बोलेगी मैं ये फिल्म नहीं करूंगा टिशा, मैं किसी. एंड मैंने पूरी रात बैठ के उसको बस कन्विंस किया. उसको बस कन्विंस किया कि यार प्लीज मैं हो जाएगा, कर पाएगी, एंड आई विल सेंड यू द फिल्म कभी. I mean, she did a brilliant job. Like brilliant, like क्लास में तालियां बजी उसके लिए. मतलब she did a brilliant job. सब लोग उसको बोल रहे. वो उसके बाद खुद ही वो मेरे को बोली, सुनना मम्मी भी मांग रही है फिल्म देखा. मैंने तो बोला था तेरे को. तो एंड ऑपोजिट टू हर was Parth, my friend. He himself volunteered कि यार मैं कर देता हूँ. और मैं सोच के देखा यार मैं क्या एक्टर ढूंढ रहा है, एक्टर तो मेरे सामने ही है. वो भी अपने फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहा था और हम दोनों एक साथ ही प्रोसेस ये कर रहे थे. एक्टर तो मेरे सामने ही है, ये भी दिल्ली का है, टिशा भी दिल्ली की है, दोनों के एनर्जीज मैच हो जाते हैं. और मुझे यहाँ चाहिए धमासान नॉन स्टॉप झगड़ा. दो लोग बिना फिजिकल हुए एज इफ के दोनों का गला दबा रहे हैं. यू नो, ऐसा झगड़ा चाहिए था मुझे कि विदाउट एनी बैकग्राउंड म्यूजिक भी ना ऐसा लगे कि जैसे बर्तन फेंक देता हो ना कि एक दूसरे के ऊपर दूसरा बोल रहा है, ऐसा चाहिए था मुझे. वैसा ही मिला और मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ा. वो दोनों ने खुद से इम्प्रोवाइज किया.
कितने सारे जोक्स है उस फिल्म में, लोग बोलते हैं कि तूने, मैंने नहीं लिखा है। वो कुछ पार्ट में इम्प्रोवाइज किया है, टिशा कुछ अपने से लाई है, बिकॉज द कास्टिंग वाज राइट। अब कास्टिंग रॉन्ग होता तो उस एक्टर को मेरे को 100 इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। सो आई थिंक someone who does this very well is Anurag Kashyap. Right. Because even Anurag Kashyap talked about this. जो तूने ये कहा था कि उसकी जो real life personality है, basis that you took her. Yeah. Anurag Kashyap talked about it. Sunny Leone के बारे में. For Kennedy. That she has melancholic sad eyes. Yeah. So and his process is really interesting because वो एक एक्टर के साथ काम करेगा किसी छोटे से रोल में and then बहुत टाइम बाद उसको एक मेन रोल मिलेगा वो। Same with Nawazuddin, Black Friday, and then Gangs. Yeah. Vineet Singh. Yeah. Gangs of Wasseypur, Murabba, and then Mukkabaz. In fact, Anurag Kashyap and Nawazuddin go way back because Nawazuddin, you know, शूल में था, उसने एक्ट करा था। Yeah. He did a lot of projects like that जहाँ वो दोनों maybe main उसमें नहीं थे। So probably it helps कि मतलब रियल लाइफ पर्सनालिटी पे बेस करके ले लो। मतलब चल अब एक्टर भी थोड़ा बहुत सही होना चाहिए, वो भी definitely, of course, definitely। So you were talking about communication कि casting is one thing, if it's on point it helps a lot। उसके बाद how do you communicate, like just before the scene when you're going into it, do you do like workshops like shoot से पहले 2-3 दिन? I mean workshops के लिए ना हमारा उतना luxury नहीं होता, but then मतलब even like hanging out at a cafe, just that definitely that's also a workshop। I would not do it, मतलब ऐसा मैं पहले करता नहीं था। पहले ये हैबिट नहीं थी, but पहले क्या कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं करना है? नहीं, या फिर जस्ट करता नहीं था। ठीक है कि चलो but then I realize how important workshops are। मैं जरूर करता हूँ हर एक फिल्म के पहले एटलीस्ट, एंड आई डोंट बिलीव वो स्क्रिप्ट मोबाइल में देख के एंड वो सब कुछ, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं पर्सनली मैं 100 रुपए 200 रुपए खर्च करूंगा, पर मैं सबको प्रिंटेड कॉपीज दूंगा पेपर पे स्क्रिप्ट की। फोन को फील ही नहीं आ रहा यार, और फील की बात ही नहीं यार, मैं आई डोंट बिलीव इन इट कि बार बार आप फोन को आप खोलोगे फिर वो देखोगे दिस एंड दैट। स्क्रिप्ट पे रहो, स्क्रिप्ट में नोट्स बनाओ, जूम करो, स्क्रिप्ट पे नोट्स बनाओ एंड दिस एंड दैट। सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन डूइंग दैट, एंड बिफोर दैट ऑल्सो मैं एक कॉपीज कुछ रेडी करके रखता हूँ, एक्टर्स को देता हूँ। कोई भी चाय की टपरी पे बैठ जाते हैं, कोई कैफे में तो होता ही नहीं है कभी, यूजुअली कई दोस्त के घर बैठ जाते हैं, बुला लेता हूँ, आ जाए कुछ, लेट्स गो थ्रू द लाइट्स एंड दिस एंड दैट। इट हेल्प्स टू सेट कॉन्टेक्स्ट। और अपार्ट फ्रॉम दैट टू, लाइक अगर किसी के साथ नए के साथ काम कर रहे हो तो फिर और ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज़ यू डोंट इवन नो देम, you don't even know them। बस सेट पे मिलोगे तो फिर सीन उतना जेलअप नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा ना क्या। अच्छा ये अगर डायलॉग वो अगर मैंने इस भाव के साथ ये लाइन लिखी है और इसने कुछ अलग ही इंटरप्रेट किया इसका फीलिंग, तो वो सेट्स पे पता चले, इससे अच्छा मुझे पहले पता चले ना, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर वर्कशॉप्स होती भी है, जस्ट लाइक मीटिंग 2-3 days बिफोर द शूट, तो पहले 1-2 दिन तो वी आर जस्ट हैंगिंग आउट। इट्स लाइक कि चल हैंग आउट करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, लेट्स जस्ट डू दैट, लेट्स गेट टू नो ईच अदर, एंड दैट हेल्प्स डेफिनेटली। सो अपार्ट फ्रॉम वर्कशॉप्स, what other things help? Nothing, I mean nothing, yeah. You just have to be one and only thing: empathy, understanding and patience. Lots and lots of it. Lots and lots of patience. क्योंकि देख, आप जब एक डायरेक्शन टीम में होते हो ना, आप जब डायरेक्टर हो ना, स्पेशली यू आर जस्ट, ऐसे ही नहीं बोला जाता सेलर ऑफ द शिप। संजय लीला भंसाली को एक बार पूछा था कि कौन सा सबसे डरावना पार्ट है, कौन सा डिफिकल्ट पार्ट है, संजय लीला भंसाली ने बोला कि मैं जो गाड़ी से निकल के पहला कदम सेट पे रखता हूँ ना, 100 लोग दौड़ते हुए मेरे पास 200 क्वेश्चंस लेके आते हैं, एंड मी एज अ डायरेक्टर आई हैव टू आंसर ऑल ऑफ देम, यू नो, वो चीज बड़ा मुझे पहले, so you have to be prepared for that। तो एज अ डायरेक्टर आप कितना कुछ मैनेज कर रहे हो, लोकेशन पे कुछ लफड़ा हुआ आप वो मैनेज कर रहे हो, आर्ट डिपार्टमेंट कहाँ है, एक प्रॉप मिसिंग है, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन आल्सो द एक्टर्स। तो इतने में ये करके अभी एक्टर फकअप करेगा तो आपको गुस्सा तो आएगा, ऑफ कोर्स, पर वो आप दिखा नहीं सकते।
वो आप दिखा नहीं सकते. जिस दिन आपने दिखा दिया या फिर आपने चिल्ला दिया गया, अनलेस यू संजय लीला वो तो अलग बात है. बट देन वो तो ही इज इन अ स्टेट ऑफ एक प्रिविलेज उसने अर्न किया है ये कि ही कैन डू दैट. बट बिकॉज यू नो बट ऑल्सो अगेन वो प्रिविलेज अर्न करने के बाद भी इज इट स्टिल लाइक नो, इट्स नॉट जस्टिफाइड. सी कोई भी तरीके का ऐसा मिसबिहेवियर is not justified at any cost. People say that the rudeness, rudeness of an artist is what makes him, very mischievous and stuff like that. But I really think that. Yeah, but ऐसे जो unusual चीजें होती है, even rudeness के अलावा भी, like संजय लीला भंसाली तो छोड़, इटर्नल सनशाइन के टाइम मिशेल गॉन्ड्री, एक्टर का नाम क्या था? जिम कैरी. Yeah. So Jim Carrey was going through something. उसके अपने लाइफ में कुछ लफड़े चल रहे थे. I was sort of depressed, whatever. And he communicated that to Michel Gondry. And I was like, ये सीन है bro. And Michel Gondry was like, देख ये चलने दे, सही है ये, तेरे कैरेक्टर हेल्प करेगा काफी. Artists are incredibly selfish people. Artists are the worst and they are the best. मतलब एट वन पॉइंट काफी ज्यादा एम्पैथी होनी चाहिए टू वर्क विद एन एक्टर एंड ऑल ऑफ दैट, बट देन उसी का एक ऑपोजिट साइड ये भी है कि ठीक है कोई सीन नहीं. पागल लोग होते हैं ये आर्टिस्ट. हम लोग जो रहते हैं ना, वी नेवर नो द मैडनेस इज द क्रेजीनेस, द मैडनेस इज इनसाइड अस. फिर उस पागलपन को काफी लोग जस्टिफाई भी कर देते हैं. बहुत लोग जस्टिफाई कर देते हैं. कभी कभार जरूरी होती है, पर कभी कभार आप किसी पे हार्म इन्फ्लिक्ट करना साइकोलॉजिकली या फिजिकली कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता इन द नेम ऑफ आर्ट और प्योरिटी. ये कभी भी नहीं हो सकता. एग्जैक्टली. सो आई गेस दैट्स इट यार. 2 घंटे अपन ने शूट कर लिया. वाह यार. प्रॉब्ली विल एंड दिस. हाँ ना. had a really fun conversation यार. I had an amazing time, and I think it's very important for the person who is hosting it. I think for you are a person with so many opinions of your own. I think that always helps so much, because then I have things to chew on and then tell it to you. So thanks for inviting me to the podcast, man. I wish you more and more success, and hope we do it soon again. Yeah, for sure. Yeah. जब तो फिल्म रिलीज करेगा अपने कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और आप अगर कुछ करें तो प्रॉब्ली नेक्स्ट गाड़ी में कब होगा तू? यार मैं आ रहा हूँ, मैं शायद सितंबर को आ रहा हूँ, पर वो मेरे दोस्त के दीदी की शादी है, उसके लिए शायद. अच्छा. मैं वो शायद तब आ रहा हूँ, बट वैसे लॉन्ग टर्म टाइम के लिए मैं आ रहा हूँ दिवाली में. क्या? Yeah, probably we'll meet then. Definitely, यार.